इतना दिया तो आप अकेला बीस किया सॉरी देने के लिए सर सिर्फ आप बीस हम तो मैं प्यार करता है। हम लोग को के भी दिया भगवान में क्या होता है सर इतना हम लोग को मिस करते हैं वो देना था होगा सीएम सर बेचारा कल वो आउट ऑफ स्टेशन हो गया ना कल तो त्रिपुरा जाके आते में कोई भी विश नहीं किया बोल के मैम बहुत दुखी कर हम पूरा इमोजी देखता भी नहीं कोई अभी को बोला हम लोग भी भूल गया देख चलो अपनी नेक्स्ट ईयर के लिए कभी को बोले तो आपको चलो सिक्किम में है सामने नंबर 4 क्वेश्चन नंबर पहले अवेयर करा टॉपिक्स आर देयर यू कैन वन टॉपिक जी लोग लेके जा रहे नहीं जा रहे जी लोग ले जाओ यार जी लोग प्लीज आइए जी साथ साथ खड़े हैं बहुत इनिशिएटिव है जी वो लगे ना इसको दो ताराम है ओए माने 망고 한국말 강원로 냠포 어떤 뒤에 냠포 파이네 그 포인트 거 뭐 리더 또 앞에 있나 CM से ये सर किंतु जी ने 그냥 있으면 별로 못 쳐. वो तो बाद में बजट नहीं पता वो इंडिपेंडेंट है वो हम लोगों ने आरुख कम करने से अच्छा है लॉगिन करनी ओ वो भी कम कम बोल के कर सकते लंबा नहीं ओरिजिनल तो क्या है नहीं एक पॉइंट जैसे हम लोग टैक्स भी दूंगा लेकिन कुछ छुट्टियों पे आए वो हीरा हो जाता है ना हम बोला दोनों एक ही स्पीकर आप स्पीकर देख लीजिए Members, and I welcome you all to the third sitting of 11th session of the 7th Legislative Assembly, and we will take up question hour now. Start question number 39, Sri Navam Tuki. Start question number 39. फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा था कि इनकम टैक्स जो नोटिस आम लोगों को जो भेज रहा है तो ऑफिस वो लोग गुवाहाटी में बैठते हैं और अरुणाचल का जितना भी ऑफिसर्स है, बिजनेसमैन है, कॉमन पब्लिक है, इन लोगों ने अपना ज़मीन जायदाद बेच के और अपना छोटा मोटा बिजनेस करके, खेती करके, बागान करके अनेक प्रकार से इनकम से कैश डिपॉजिट बैंक में ट्रांजेक्शन करते थे 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले। इसको अभी पैन कार्ड से सबको लोगों को पैन कार्ड इशू कर दिया गया बिजनेस करने के लिए, इनका कार्रवाई करने के लिए। वो पैन कार्ड में सारा डॉक्यूमेंट हर एवरी इंडिविजुअल का आ जाता है और उसे चुन चुन करके वो नोटिस भेजते हैं, पेनल्टी लगाते हैं और गुवाहाटी में बुला करके वो क्वेश्चन करते हैं और पेनलाइज करते हैं कि तुमको इतना पेनल्टी देना पड़ेगा, इतना टैक्स भरना पड़ेगा। अगर इसमें 1 लाख का या 10 लाख का अगर डिपॉजिट भी हो गया उसका ऊपर में भी वो पेनल्टी लगा करके इसे नोटिस करके रिपोर्ट इस प्रकार से अनेक लोगों से आ रहा है, लेकिन सरकार का नॉलेज में है कि नहीं पता नहीं है, लोग बताते नहीं है।
और लोग बताने से डरते हैं और डर डर करके लोग जी रहे हैं और अपना वो लोग ज़मीन बेच करके वो फाइन वगैरह तो भी दे रहे हैं। तो उसका मैं सप्लीमेंट्री प्रश्न इस प्रकार का हुआ, सरकार ने तो जवाब तो दिया है, वित्त मंत्री साहब ने जवाब दिया है कि इस प्रकार से अभी तक कोई ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं है और कुछ ऐसा होगा तो सरकार आगे टेकअप करेंगे। तो मेरा कहना है कि ये नोटिस जब दे रहा है तो उसको फर्दर नोटिस देने से रोका जाए। सरकार रुकने से ठीक है, या भारत सरकार से बात करके ट्रैवल के ऊपर में जो इनकम टैक्स एग्जाम्पशन है अनेक रूल्स में कानून्स में, और हम लोग जो अरुणाचल जो ट्रैवल तो 100% ट्राइबल स्टेट है, फिर स्टेट इज प्रोटेक्टेड स्टेट, प्रोटेक्टेड ट्राइब्स। तो इस प्रकार से अगर हरासमेंट वहाँ से मिनिस्ट्री से अगर देगा तो लोग किस प्रकार से जिएगा, तो आगे कैसे बढ़ेगा। जब हम लोग अब 6 शेड्यूल में जाने के लिए काल भी आप लोगों ने चर्चा किया होगा, वापस मांग रहे हैं। 6 शेड्यूल में जाने का मतलब है हम लोग फर्दर स्ट्रेंथनिंग और पोजीशन अवर प्रोटेक्ट अवर ट्राइब्स, अवर कल्चर, अवर आइडेंटिटी, अवर लॉ सिस्टम एंड फॉर आवर लैंड एंड इट्स रिसोर्सेस। तो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अभी मांग रहे हैं भारत सरकार से। फिर दूसरा तरीका से फिर वहाँ से हरासमेंट भी आ रहे हैं, इसको सरकार किस प्रकार से चेक करेगा और कैसे उसका फैसला होगा। और रजिस्टर अध्यक्ष जी, रिप्लाइज तो दिया गया है, फिर भी ऑनरेबल मेंबर का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दिया गया है कि जो इनोसेंट लोगों को इस तरह का गुवाहाटी में बुला के हरासमेंट दे रहा है और टैक्सेशन ले रहा है, तो ये जो बोला है उसका बारे में तो सरकार का कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रिवाइज का तौर पे कि जो इंडिजिनियस जो ट्राइबल है, शेड्यूल ट्राइब्स है, खास करके अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब है, के लिए इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है। और वो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है कि सेक्शन 10 विदिन ब्रैकेट 26 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस एक्ट का तहत शेड्यूल जो ट्राइब है वो इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है। 1961 का जो एक्ट है, इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम एक्रूड इन दिस शेड्यूल एरियाज, हम जो इनकम करेंगे हमारा अपना शेड्यूल एरिया, उनका ऊपर हमको इनकम टैक्स नहीं देना है। हम एज स्पेसिफाइड इन क्लोज 25 ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये ऑर्डर अवेल करने के लिए, ये फैसिलिटी अवेल करने के लिए हमें, जो हम ट्राइबल लोग हैं, हमें एक टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट TE इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑब्टेन करना होगा, और वो दिया जाता है अंडर सेक्शन 197 ऑफ इनकम टैक्स 1961। ये टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ये देता है। ये लेने से, ये हम सभी का है, ये हम टैक्स नहीं देना होता है। अगर हम बिजनेस करता है अरुणाचल प्रदेश में 2% इनकम टैक्स ले लेता है, फिर वो हमारा अकाउंट में फिर वापस दे देता है। लेकिन हमारा जो इनकम है, हमारा इनकम अगर हम बाहर में जाके हम कुछ बिजनेस करेगा, यानी आसाम में जाओ, कहीं में नॉन शेड्यूल एरिया में आप जाके बिजनेस करो, तो उस बिजनेस के लिए ये जो है इनकम टैक्स इज पेएबल, आप इनकम टैक्स देना होगा वहाँ में। हमारा जो ऑफिसर है अरुणाचल प्रदेश का, जो ऑफिसर है,
वो भी अगर दिल्ली में अगर आज पोस्टेड है तो इनकम देना होगा, असम में पोस्टेड है तो इनकम टैक्स देना होगा उनको, अरुणाचल में आने से इनको इनकम टैक्स देना नहीं होता है। तो ये चीज़ है। नॉन शेड्यूल एरिया में जाके अगर अर्न करेगा तो वो देना होगा। The income tax department as a routine matter serves notices to carry out raids from time to time as per their norms. The income tax being union subject is dealt with by the income tax department, Government of India, and are not bound to seek constant. अगर किसी को रेड करना है और रेड भी किसको करेगा, जिसका इनकम एक्रूड आउट ऑफ दी शेड्यूल एरिया। कहीं में असम में हमारा बिजनेसमैन का कोई काम करेगा तो उनका अगर 4-5 साल का पुराना अगर कोई केसेस है, नया केसेस में वो नहीं करेगा, पुराना केसेस में अगर ऐसा उनका पास रिपोर्ट है तो वो करेगा। हमसे कोई परमिशन लेने का दरकार नहीं। अरुणाचल गवर्नमेंट से, अरुणाचल गवर्नमेंट इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो। वो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल का मुताबिक, एक्ट का मुताबिक वो रेड करता है। तो हाँ, एंड आर नॉट बाउंड टू सीक कंसेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन सच मैटर। वो हमसे कंसेंट लेने का दरकार भी नहीं होता है और हम देता भी नहीं है कंसेंट। हम देने का भी दरकार नहीं है, हम देता भी नहीं है, हम पूछता भी नहीं है हमको। तो इसलिए हमको उसका ऊपर जानकारी नहीं है। इन केस एनी रिपोर्ट ऑफ इनोसेंट इंडिजिनस ट्राइबल पीपल बीइंग पेनलाइज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट who is not having income beyond this scheduled area, beyond the tribal area, हाँ, like अरुणाचल प्रदेश में अगर इनकम कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर उसका ऊपर अगर हमारा कोई रिपोर्ट आता है कि उनका ऊपर ले रहा है, आप अगर बोलेगा कि नहीं, हमारा अरुणाचली यहाँ में जो बैठा है, अरुणाचल में बैठ के जो कमा रहा है, यहाँ बिजनेस करके कमा रहा है और उनको बुला बुला के रैंडमली उनको रेड कर रहा है या उनको टैक्स ले रहा है, अगर ऐसा रिपोर्ट मिलेगा हमको तो हम जरूर भारत सरकार से हम लिखा लिखी करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिखा लिखी करेगा कि आप अगर ऐसा कर रहा है तो आपका गलत है, इसको आपका वो है, इसको है। सो इन केस एनी रिपोर्ट ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल पीपल बीइंग पेनलाइज्ड बाय इनकम टैक्स हु इज नॉट हैविंग एनी इनकम बियॉन्ड दी ट्राइबल, जो है शेड्यूल एरिया है, हाँ, द गवर्नमेंट विल टेक सच केसेस विदिन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम जरूर उसमें हम लिखेगा और हम वी विल टेक अप द मैटर विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। ये इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड है हम लोग, दैट इज फॉर श्योर, वो तो बाय लॉ है। लेकिन ये जो 10 साल 20 साल पुराना जो पहले का जो कैश डिपॉजिट, क्योंकि कैशलेस ट्रांजेक्शन तो नोटबंदी के बाद ही हुआ। नोटबंदी के बाद में जो कानून अगर बना है तो उसके बाद प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये तो रिट्रोस्पेक्टिव एक्शन हो रहा है। रिट्रोस्पेक्टिव माने पीछे पैन कार्ड से हिसाब, आपका अकाउंट से हिसाब निकाल करके 15-20 साल पहले का भी कैश डिपॉजिट आपका अकाउंट में कैश पैसा किस लिए आया, कहाँ से आया, इनका इनकम बताओ, कौन दिया, वो सब ढूंढ करके निकाल करके नोटिस भेजा। आपको सबको भी मिला होगा या मिलेगा, अगर मिलेगा। अभी तो बिना कंप्लेंट का दे रहा है, बाद में कोई एक दूसरे को कंप्लेंट देना शुरू होगा तो सबको मिलेगा। तो दिस विल हारासमेंट टू एवरी सिटीजन ऑफ ट्राइबल इन अरुणाचल प्रदेश। ये लाइटली नहीं लेना है। जरूरत पड़ने से स्टेट गवर्नमेंट उसको स्ट्रांगली टेकअप करना पड़ेगा या रेजुलेशन लेकर के भारत सरकार को भेजना है। ये इस तरह का तो हमारा कोई रिपोर्ट नहीं है हमारा ऊपर। अगर इस तरह का होता है तो हमें रिपोर्ट भी आना चाहिए कि सरकार को रिपोर्ट आना चाहिए। सरकार को अभी तक रिपोर्ट आया नहीं इस तरह का। और आप जो बोला है 10-15 साल, जो पुराना केस पे ही वो लोग कार्रवाई करेगा, नया केस में कार्रवाई नहीं करेगा। पुराना केस में उसको रिपोर्ट मिलेगा, ऐसा तब करेगा। फिर भी अगर इनोसेंट, आप जो बोला है इनोसेंट लोगों को या 10-15 साल का पैसा, ऐसा कुछ केस है और वो इनोसेंट है, उसमें होना नहीं चाहिए था। हम जरूर वो रिपोर्ट हमको आने से हम जरूर उस पर हम इनकम टैक्स का साथ विल टेक अप मैटर विद इनकम टैक्स। सर सप्लीमेंट्री स्पीकर सर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फाइनेंस मिनिस्टर से इस प्रकार की है
कि आज से 3 साल पहले रिजोल्यूशन फॉर्म में हमने भी एक तो लाया था इस सेम मैटर में। द रिप्लाई ऑफ द गवर्नमेंट वाज कि आप विथड्रॉ कीजिए, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री से टेकअप करेगा। तो उसके बाद देखता आया कि हर दिन नोटिस तो आते रहता है इनकम टैक्स से। सर, इन इंडिविजुअल केसेस कि आज हमको मिला, कल दूसरा को मिला, वो गवर्नमेंट को हम लोग बताने के बजाय क्या गवर्नमेंट ऐसा स्टेप उठा सकता है कि सिंस अरुणाचल इज इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड एरिया, तो बिल्कुल ही नोटिस नहीं देना है बोल के मिनिस्ट्री से टेकअप करके और डिपार्टमेंट से एक अच्छा मीटिंग करके इसको वंस फॉर ऑल बंद करने का कुछ प्रावधान हो सकता है क्या? और इनकम टैक्स लकीली इन ईस्टर्न डिब्रूगढ़ सर्कल वी हैव वन लोकल ऑफिसर देयर फ्रॉम आवर अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो उनसे हमने इंटरेक्ट किया है, व्हाई दिस इज सो। हर समय ऐसे नोटिस देते रहता है, बोलता है कि सर ये तो कंप्यूटर हम लोग का सिस्टम ही खुद ही जनरेट करता है, हम नहीं करते। तो उसको बंद करने के लिए क्या सीएम लेवल से और डिप्टी सीएम फाइनेंस मिनिस्टर दोनों मिलके मिनिस्ट्री में टेकअप करके इसको वंस फॉर ऑल जब तक हम लोग एग्जेम्प्टेड एरिया में है तब तक के लिए हर कुछ राहत दिलाने के लिए कुछ फाइनल मीटिंग करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल वाइज हम लोग सरकार को कितना बता पाएगा। और ऐसा भी है कि इंश्योरेंस का आई एम वन ऑफ द विक्टिम्स। इंश्योरेंस का कुछ था, मैच्योर हो गया, तो वो मैच्योर्ड अमाउंट को मेरा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और अब तक कि 3 या 4 नोटिस आ चुका है, क्योंकि इट इज़ नोन कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी खुला था जहां हमको कोई टैक्स का भी कोई जरूरी नहीं, एग्जेम्प्टेड था, और वो पैसा हमारा अकाउंट में जो मैच्योर होके आ गया फिर उसके ऊपर भी नोटिस। इससे सिंपली नथिंग बट हैरासमेंट ओनली। वो बैंक ट्रांजेक्शन में जितना भी होता है वैसा ही है सर। इसलिए एक एक का हम लोग रुके बिना, एक एक इंडिविजुअल का नोटिस का रुके उसको देखने के बजाय क्या आप लोग हाईएस्ट लेवल में टेकअप करके वंस फॉर ऑल इसको बंद करने का कुछ प्रावधान कर सकेगा क्या? थैंक यू। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहेगा। ये क्वेश्चन में आई थिंक 2 प्रकार का इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है क्वेश्चन, जो अभी सप्लीमेंट्री के रूप में और जो मेन क्वेश्चन है हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और सीनियर मेंबर श्री नबम तुकी साहब ने जो रखा है, इसमें क्लैरिटी हम लोगों को सबको पता है कि जो ऑनरेबल डीसीएम साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन सा सेक्शन में हम लोगों का जो शेड्यूल एरिया, जो ट्राइबल एरियाज इनकम टैक्स से एग्जाम्प्टेड है। इनकम टैक्स से हम लोग एग्जाम्प्टेड ज़रूर है, मगर अभी जो हमारा मेंबर श्री लोमोतांग साहब ने जो कहा कि आजकल इनकम टैक्स का ऑफिस से जो नोटिस वगैरह जो आता है वो एक्चुअली वो ऑटो जनरेटेड उन लोगों का सिस्टम से रिफ्लेक्ट करके जिसका भी नाम आता है तो उसको नोटिस शायद पहुंच जाता होगा। हम लोग ज़रूर इनकम टैक्स से एग्जाम्प्टेड है, नो डाउट, मगर बैंक में एबनॉर्मल अगर ट्रांसलेशन होगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम में रिफ्लेक्ट किया जाएगा उसको, तब जाके उसको नोटिस आ जाता है। तो जाके उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपका अकाउंट में इतना जो एबनॉर्मली जो ट्रांसलेशन हो गया उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम तो हम लोगों को दिखाना ही पड़ेगा। वी आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द सोर्स, इनकम टैक्स से एग्जाम्प्टेड है, मगर आपका सोर्स कहाँ से आपको इतना पैसा आया है उससे हम लोग एग्जाम्प्टेड नहीं है। वो तो आपको ये दिखाना ही पड़ेगा इनकम टैक्स ये वालों को। तो एक चीज़ ये है कि अभी हम लोग का खास करके नॉट ओनली इन अरुणाचल, जहाँ में भी 6 शेड्यूल का जहाँ प्रोविज़न है और जो लोग इनकम टैक्स से एग्जाम्प्टेड है, हम लोग एक्चुअली इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग फाइल करने का आदत नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न जो हम लोगों का इनकम टैक्स काटेगा तो नहीं, मगर इनकम टैक्स साल का आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करता है उसको मेरा हिसाब से हम लोग एक हैबिट रखना चाहिए
जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो एग्जाम्प्टेड है, इनकम टैक्स से एग्जाम्प्टेड ज़रूर है, मगर इनकम टैक्स जो रिटर्न जो फाइल करता है वो होने से फिर आपका क्लैरिटी आ जाएगा, तो उसमें परेशान नहीं होगा। तो हम लोग क्या है कि ट्राइबल्स लोग, हम लोग बुक कीपिंग हम लोग अच्छा से करता नहीं है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है हम लोगों का। तो इसमें डेफिनेटली जो भी नोटिस शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू से आया होगा, और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को देख के ही वो भेजा होगा कि फलाना डेट में आपका अकाउंट में इतना ट्रांजेक्शन हो गया, तो उसका आपका इनकम सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो वही जाके इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर आपको सोर्स ऑफ इनकम ये है बोल के विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे देने से वो तो मामला ख़त्म है, उसमें उतना सीरियस वाला बात नहीं है। मगर एक हैबिट जो है आज कैश डिपॉजिट कई वो ढूंढ रहा है, कैश डिपॉजिट, चाहे वो कैश डिपॉजिट भी हो, जो भी हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। जब तक आप सोर्स ऑफ इनकम एक्सप्लेन नहीं करेगा तो कैश तो कहीं से तो ऑटोमेटिक आसमान से तो गिरेगा नहीं, या तो ज़मीन बेचेगा, या तो गाड़ी बेचेगा, या तो कुछ बिजनेस करके कैश होगा, तो जो भी हो उसका रिलेटेड जो भी एविडेंस है वो लेके देना होगा। तो स्पेशली मैं इंटरव्यू इसलिए करना चाहता था ऑनरेबल स्पीकर साहब कि हम लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न का जो फाइलिंग जो होता है, इनकम टैक्स रिटर्न का वो प्रोसीजर जो है हम लोगों को भी एडॉप्ट करना चाहिए और वो हैबिट रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू जी। नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन 24, श्री वांगलिन लोंगडोंग। Thank you, Speaker, sir. My supplementary is only to ask the Honourable Minister, what steps will he take to augment the plantation of bamboo in Tirap district, whereas it is a fact that large bamboo growing areas are there, and what incentives will he give, and what sort of vocation will he take up for the entrepreneurs, the youngsters who may like to participate in the growth and plantation of bamboo, and also some small-scale industry type of activity. Honourable Minister. Honourable Speaker, sir, ये honourable members, वांगलिन लोंगडोंग जी की स्तर क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आंसर ऑलरेडी यह दिया हुआ है, फिर भी ये बम्बू के बारे में APBRDA, अरुणाचल प्रदेश बम्बू रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एजेंसी, तो इसमें सरकार की तरफ से क्या इनिशिएट किया और क्या किया जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा सदन में। अभी बम्बू जो है हम लोग ट्रैवल खास करके अरुणाचल और सभी जनजाति के लिए, हम लोग अरुणाचल प्रदेश के लिए तो बम्बू अगर हम लोग देखा जाएगा तो हम लोग का रिसोर्स में 50%, 45 to 50% हम सब बम्बू का ऊपर में, जंगल में हर चीज़ में हम बम्बू हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे घर बनाने में हो, चाहे पूजा करने, हर चीज़ में। तो उसके बारे में हम लोग को खास करके ट्रैवल लोग को अवेयरनेस और किस प्रकार और अधिक से अधिक हम बम्बू को हम बढ़ाए, बम्बू को किस प्रकार से और प्लांटेशन अधिक से अधिक करें, और उतना ही नहीं, बम्बू से हमारा लोगों को लाइवलीहुड कैसा मिले, उसके बम्बू के ऊपर हम सस्टेनेबल कैसा हो। तो माननीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल मेंबर्स ने जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें मैं सदन को और ये बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में SFRI देहरादून को छोड़ के नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश में जो बम्बू सेटम चेसा में है, जिसमें से इन अरुणाचल प्रदेश वी हैव 52 वेराइटी ऑफ बम्बू, हमारा पास 52 है अभी, और कुल मिला के प्रदेश में चेसा में 75 हमारा पास वेराइटी है, जिसमें से आज तक 650 लोगों को हम लोगों ने बम्बू के ऊपर ट्रेनिंग दे चुके हैं, एंड 490 फार्मर को हम लोग बम्बू प्लांटेशन के लिए हम लोग सीडलिंग भी प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें से 10,000 लोगों को
पूरे प्रदेश में बम्बू के ऊपर हम लोगों ने अवेयरनेस दी है, जिसमें विशेष करके जो बम्बू हमारा प्रदेश में जो हम उसको खास करके हम बिजनेस पे हम यूज़ कर अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं बाहर बेच रहे हैं, उसके ऊपर हम इंडस्ट्री में चेयर बना रहे हैं और टेबल बना रहे हैं। उसमें अभी तक 10 बम्बू है जो हम खास करके अरुणाचल प्रदेश के लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके नाम है, मैं नाम थोड़ा बताना चाहूँगा कि जिसमें हमारा जाति बम्बू है, मोकल है, बोकाहू है, बोगोली है, एस्पियर है, ब्राह्मी है, लगिन बम्बू, उसके बाद कोनक है, टोबिन है, ऐसा कई प्रकार है हमारा प्रदेश में जो बम्बू है। तो अभी तक अरुणाचल प्रदेश में बम्बू इंडस्ट्री हमारा प्रदेश में 5 इंडस्ट्री है, जिसमें से अरुणाचल प्ले इंडस्ट्री लिमिटेड नामसाई में है, फटकाई प्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड नामसाई, गोलोसो बम्बू इंडस्ट्री लिमिटेड पासीघाट, चौरारियल यूनिट किमी, सियंग बम्बू प्राइवेट लिमिटेड लिकाबाली, जिसमें से वो इंडस्ट्री में 30% की जो सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नेशनल बम्बू मिशन से दिया जा रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट ने 30% जिन्होंने जो अप्लाई किया सब्सिडी के लिए उसको भी स्टेट गवर्नमेंट से दिया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार, और सर उतना ही नहीं, TCL में सिर्फ बोल के नहीं, जितने भी जो अवेयरनेस है पूरे अरुणाचल प्रदेश में हर लोगों को, जनजाति को हम लोग जागरूक दे रहा है और अवेयरनेस दे रहा है। मैं ऑनरेबल स्पीकर, आपके माध्यम से मैं सभी ऑनरेबल मेंबर्स को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग भी कभी अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में विजिट हो, जब विजिट करते समय हमारा लोगों को ये भी एक बम्बू का इम्पोर्टेंस और इनको प्लांटेशन कैसे किया जाए उसको भी हम लोग अवेयरनेस साथ साथ देने से अच्छा रहेगा। ये हमारा पूरा सदन से मेरा एक, आपके माध्यम से मेरा एक अनुरोध है, क्योंकि बम्बू से हम बहुत कुछ आगे, बहुत हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हम किया जा सकता है। और जिसमें ज्वेलरी, पुमा में एक ज्वेलरी बम्बू का इंडस्ट्री है, वो बाहर में भी सप्लाई करते हैं, वो पेन बनाते हैं, कानपुर बनाते हैं, वो भी बाहर में सप्लाई करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने पूरे अरुणाचल प्रदेश में, पूरे अरुणाचल के लिए नीति आयोग में जब से अब देखिए 2016 से लेकर आज तक, 17 से लेकर आज तक जो बम्बू को और आगे अधिक से अधिक प्लांटेशन हो, बम्बू के माध्यम से हमारा लोगों को रोजगार मिले, अरुणाचल का युवाओं को रोजगार मिले। तो इस प्रकार का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी बम्बू को, इसका हमारा लोगों को लाभदायक कैसा हो, तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये बम्बू को और प्लांटेशन और हमारा इंडस्ट्री और बढ़ाने के लिए खास करके TCL रीजन में भी हम लोगों ने 500 करोड़ का इस बार हम लोग नीति आयोग ने ये भेजा हुआ है। तो हमें पूरा विश्वास है भारत सरकार में ये भी हम लोग को इस बार या आने वाला साल में जरूर वहाँ से अप्रूव होके आएंगे, और या आने के बाद और अधिक से अधिक, और कहीं कौन जगह में और जरूरी पड़े, कौन जगह में और इंडस्ट्री बिताना पड़े, कौन जगह में और हमको अधिक से अधिक और प्लांटेशन करना पड़े, उसके लिए हम लोग जरूर डिपार्टमेंट और सरकार और डिपार्टमेंट उसको हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। Start question 3, Sri Ninongiri. Honorable Speaker, sir, through you I would like to ask the Honorable Education Minister in regard to the vocational teachers who were appointed under the Samagri Shiksha ISCC, which I think are numbered to about 188 as per your reply. Of course, because I understand there may have been some certain constraints, and so the government has taken some modus operandi. And regarding the amount of the state top-up amount,
I would just like to once again refer to you, sir, that at this age, the teachers, especially the vocational teachers, are very much depressed, they are very much hurt, very much lowly paid. Frankly speaking, sir, they have become in a status like, as Shakespeare's quote in Hamlet, he says, to be or not to be. They are teachers, they are vocational teachers, as other PRT or TGT teachers. They are doing their duties as per the norms. In fact, Atam Nirbhar Bharat, and emphasis is given for the vocations, for the vocational trainings or the vocational subjects. Especially Arunachal Pradesh, I think they have taken up 2 subjects to be precise. One is IT and the other is tourism. And both the subjects are very, very important. On top of that, sir, during the evaluation of the CBSE exams, they have to go down to Guwahati, they have to do evaluation, they stay there for about 1 week or even 10 days. And during that period also, the government does not have any provision, or there is no provision for their TA or for their stay. And within that meager amount, they have to go, do the evaluations and come back. In fact, the period that they go and do the evaluation is more, the amount comes to more than what they actually get the pay. So this thing has to be looked into, sir. And I would like to just compare, for a comparison, the Haryana School Shiksha Pariyojana Parishad, the government of Haryana, they pay to the vocational teachers about 30,500. And of course in our very nearby state of Assam, they pay an amount of rupees 49,000. So this disparity has led to the grievance of the children. They are working, they have done their jobs tremendously well, and especially in these 2 subjects, on the IT and tourism, which is a new thing for us. And we must give emphasis to them, and we must at least listen to their grievances. I know as a very straightforward or as per your modus operandi, whatever that is, that the government has taken up, that you are not going to pay the state top-up amount. But when you are paying to the other TGTs, PRTs, to the SSAs and to the same, when they were all appointed together, why is that difference? And another question to you is that, sir, I've got your manifesto, the state BJP's vision document. All the party members are there. I hope you don't mind. But the document says, the document said regularization of contractual teachers under ISSC, including vocational teachers, has already been started and would be completed in a phased manner. But this is which you have done before the elections, you had said, 2019. So this I want to ask through you, Speaker sir, are there any provisions for regularizing these children or these teachers as like in the other SSA teachers, because the vocational teachers are not taken into consideration? And can't we make some provision for the enhancement? I would request the Honorable Finance Minister also to put in an ear to this. And I hope that the children also are satisfied, because this is the, the BJP vision which were given in 2019. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, Honorable members of स्टार क्वेश्चन नंबर 3 का ऊपर में जो सप्लीमेंट्री पूछा है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जो वोकेशनल टीचर के अब तक हमारी अरुणाचल में 188 वोकेशनल टीचर के हमने रिक्रूट किया है, और वैकेंसी 157 वैकेंसी अभी भी है, उसको भी हमने एडवर्टाइजमेंट किया है। और ये जो वोकेशनल टीचर्स के जो आता है, ये टीचिंग कैपेसिटी में नहीं आके उसको स्कीम के रूप में दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। स्कीम के रूप के देने के वजह से उनकी जो सैलरी है जो 25,000 अंडर रामसा प्लस 11 and 10,
and 20,000 in class 9 and 10. और जो PRT, TRT, TGT की जो टीचर्स हैं, इसकी सैलरी है सर आपकी 15,000 and 20,000. तो PRT, TGT सर जो स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं, बाकी हमारे सब्जेक्ट टीचर भी है PRT, TGT, तो उनके मद्देनजर रखते हुए टीचर को जो सैलरी हेड में आता है, सैलरी के हेड के आने के वजह से उसको हमने स्टेट गवर्नमेंट ने टॉप अप देके एट पार विद स्टेट गवर्नमेंट के PRT, TGT में दिया है. लेकिन वोकेशनल टीचर की जो है स्कीम की वजह से आने से उसको हम लोग कोई टॉप अप नहीं दे पाए हैं. और हम कैबिनेट ने 2018 फरवरी 2020 में कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि हम इस बार से टॉप अप नहीं देंगे. जो भी भारत सरकार से जो हमें जो धनराशि देता है उसी के ऊपर हम धनराशि उसको फिक्स किया जाए. और इसी प्रकार इस बार जो हमारे जो PRT, TGT के भी टीचर जो रिक्रूटमेंट हुआ अभी जो बाद में 2018 के बाद, उसको भी जो भारत सरकार ने जो हमें धनराशि दिया उसी को हमने धनराशि को उसको दे रहे हैं. तो PRT और TGT को भी हम सर टॉप अप नहीं दे रहे हैं. अगर इसके लिए जो वोकेशनल टीचर एजुकेशन ने बहुत सा मेमोरेंडम सबमिट किया है, आपने बिल्कुल सही कहा. ऑनरेबल CM को भी दिया हुआ, ऑनरेबल डिप्टी CM को दिया, हमें भी दिया. उसकी हमने चर्चा किया है, चर्चा के उनके साथ बुला के बातचीत भी किया है. यह हमारे लिए अब की हालत में तकलीफ है. और जब कोविड के दौरान में आया तो हम ये ऑस्टेरिटी मेजर्स आया, तो अभी भी इसकी जो दोबारा सबमिट किया है उसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे, करके फिर हम कैबिनेट में दोबारा लेके कोशिश करेंगे कि उसमें क्या हम कर सकते हैं. जस्ट रिसेंटली आप सब ने ये जो TGT, PGT के लिए भी आपने ऑलरेडी एक प्रोविजन प्रावधान रखा है. आई थिंक एक कमिटी में भी उसको आपने इसको टेकअप करने के लिए कहा है. तो ऑनरेबल स्पीकर, आपका माध्यम से मैं यही पूछूंगा कि क्या इनके लिए जो वोकेशनल टीचर जिसको लेफ्ट आउट किया है, इनको भी आप इस प्रावधान में आप ले सकेंगे कि नहीं? बस उतना ही पूछना सर. मिस्टर स्पीकर सर, जो प्रावधान है कमेटी होगा उसमें हम जरूर इसको भी लेके आएंगे और चर्चा करेंगे. स्टार्ट क्वेश्चन 50, श्री तारिन दत्त. माइक ऑन कर दो, आपका माइक्रोफोन ऑन कर दो. माइक्रोफोन आपका माइक ऑन करो. और आपका सप्लीमेंट्री क्या है वो बोल दो अभी. That is my question to Honorable, through Honorable Speaker to Honorable Minister Sujata. Thank you. मंत्री जी. Thank you, Honorable Speaker, sir. Question number 50, regarding the establishment of Ekalabya Model Residential School at Kamle district. Sir, government, we don't have planned any establishment any Ekalabya school at that district because there is no proposal from the district's authority. To establish an Ekalabya school, model school, a proposal has to come to our department and we'll send it to the New Delhi department. But there is a stipulated guideline which I would like to give you to Honorable Speaker for the information of the House. To open an Ekalabya model school, it is given not in the district, it is in a block. But in Arunachal Pradesh, we have more than 150 blocks. But in a block, we have only 5,000 to
24,000 population. As per the criteria, to establish a school of Eclavia, 24,000 population is must. Because out of that population, in a what is called block, 20,000 population must be there, all scheduled tribe. Then only they can ask for establishment of a Eclavia model school. And moreover, it needs 15 acres of land. That is also in free of cost. 15 acres of land. That land should also be given to the Eclavia society, to the government, by the land owners or the community's owner. So the land owners should be given totally without any favors, without any compensation. It is free of cost should be given to the Eclavia models society. So that is the criteria. After fulfilling all that criteria, the Deputy Commissioner concerned of NEDC can propose to establish an Eclavia model residential school of that particular area to state of Arunachal Pradesh. That is Department of Sajata, and will propose it to the government of India. That is the criteria. Thank you, sir. I have a supplementary. Regarding Honourable Member, allotment of plot. Let him ask the supplementary, then you can ask another one. आप कर लीजिए. Okay. आपका माइक बंद कर दीजिए. Thank you, Speaker, sir. While appreciating the stand of Honourable MLA, Mr. Dakpe, for a Eclavia Model Residential School at Kamle District, I would also like to emphasize on one Eclavia Model Residential School that has been constructed in my district at Khela village. In 2016, the infrastructure started to take its shape. It's still yet to complete. We'll be completing very soon by the month of April. But I would like to emphasize on the point that now I gather the information that for one Eclavia residential model school, an amount of 36 to 40 crore is being earmarked. Whereas in my particular school at Khela, only 13 to 14 crore was sanctioned. Yours is Eclavia? Eclavia. Okay. It's an Eclavia. I think it will be the third Eclavia. Well, you already have a Eclavia model school. We have, but what I'm trying to emphasize is that the fund position that was earmarked for that Eclavia model residential school in Tirap district was quite low compared to what the present context of the sanctioned amount is being given to the other coming up Eclavia model schools. So the point is that there is no boys hostel, no auditorium, no playground. For the playground, I had to sanction from my own SIDF amount. Water supply, I also, through the PHE, and the approach road from the DOTC and other resources I had to mobilize. So what does the minister have to say in regard to further sanction of fund to the Eclavia Model Residential School in Tirap district at Khela village? Actually, it is 15 and 16th Khela in Tirap district. There is a shortage of infrastructure development, some buildings, etc. For that, we have proposal is already sent to the government of India from our department, and it is already inaugurated virtually by Amit Shah, Honorable Minister, during the last session, I think, already inaugurated, and for the remaining infrastructure, we have already submitted the scheme to the government of India. Thank you, sir. Tarindakpa, Honorable Member, you had a supplementary. आपका supplementary था ना कुछ? Thank you, sir. मेरा supplementary ये है कि as stated by Honorable Minister, कि this should be recommended by DC. Definitely will do that. In my district, I have
around 27,000 population. And one district board block is there, that is Raga Tamen block, is having more than आपका जो है 15,000 जैसा है. There are instances that some districts are having 7,000, 5,000, but that cannot be compared with me. So I would like to request through you, sir, this next time it should be taken off for Kamla district because there is a minority blocks as stated by this Sujata guidelines. Thank you, sir. Okay. That you need not reply. That's a request. It's not a supplementary. Sir, I'm here, sir. So to the point, supplementary. Yes, sir. I'll be very precise. And I actually, this is not my supplementary question. I just need one information, sir. Through you, I would like to know from the Minister of Education, sir. As because I too have in Dirang one Eklabya model residential school in Dirang, sir. I just wanted to know through you, sir. नहीं आप एजुकेशन मिनिस्टर मंत्री सजेता से पूछेंगे ना क्वेश्चन. No, sir. But then subject is सजेता. Sir, Eklabya model school, sir. So I too have, sir, one, sir. Who's going to run this school, sir? Because my school is in the verge of completion, sir. That's it, sir. Just one information, sir. Who's going to run the school? Yes, sir. Minister of Education. कौन चलाएगा एकलव्य school? It is under Sejata department. Who will run the school of Dirang? Sir, Eklabya school. Model school, sir. Model. It is already open or not yet? Sir, it's verge of completion, sir. Verge of completion. इसमें ऐसा होता है, ये एकलव्य जो मॉडल रेसिडेंट स्कूल को चलाने के लिए कभी एनजीओ से उससे चलाता था. अभी हम लोग ये सोचते हैं, ये एक्चुअली ये हमारे ट्राइबल स्टूडेंट को पार्ट विद अदर्स कम्युनिटी के साथ में एजुकेशन देना है. यही कारण दिस इज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस स्कूल. ये तो उसमें इसको चलाने के लिए कुछ टेंडर होता है, उसमें टेंडर बाइट करेगा कौन उसमें टेंडर में होगा. तो उसमें अभी हम लोग अभी जैसा अच्छा स्कीम जो बीकेबी भी चल रहा है अभी, तो श्री रविशंकर भी चल रहा है. ऐसा हो के अभी हम लोग ने डिसाइड किया है जो अदर जो यहाँ में लोकली जो स्कूल चल रहा है वो ठीक नहीं होगा, बल्कि जो रिपूटेड ये जो स्टूडेंट जो स्कूल चलाने वाला को हम लोग अभी चलाने देता है, उसको टेंडर बाइट करता है. ये है सिस्टम. Next, start question 4. Sri Ninong Iring. Honorable Speaker, sir, I'm satisfied with the answers. Start question 25, Sri Wanglin Luangdong. Speaker, sir, I appreciate the views of the state government in recognizing the chief system of the Nokte, Wancho, Khamti and Singpho. But in detail, I would like to participate in the bill that is to come up in the Assam Frontier Regulation Act. So my question. Start question 30. Again, Wanglin Wangdong. It's your question again. The next question. 30. What's the status of the IV schools in the state? There was a budget proposal, I think, in the last year of 500 crore. You're asking about Tirap district or state? No, the state. But the question is Tirap the district. State, and again, it will come to Tirap also. But it will come to Tirap. Gradually, also. it will come to the district. First the state, then the district. Okay. So what's the status of the IV schools that were formulated by the state government? An amount of 500 crore was also earmarked, I think, in the last budget. And what about the IV schools in Tirap district and especially in my constituency? So when will it be taken up? Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, supplementary question number 30 and reply already laid at the house, table in the house. सर इसका जो IB स्कूल के लिए लास्ट ईयर में 2020 मिशन शिक्षा में 10 करोड़ दिया गया था IB स्कूल के लिए, और 10 करोड़ 21-22 में वो यूज़ नहीं कर पाया. फिर इस बार 22-23
3 में हमें फिर इसको रिवैलिडेट करके पैसे आया, और इसमें हमने सर 25 डिस्ट्रिक्ट में 25 स्कूल की हमने आइडेंटिफाई किया है। जिस प्रकार आपकी तवांग में गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कुंतेसी, वेस्ट कामेंग में बालेमू, ईस्ट कामेंग में सर ऋषिक्रोंग, पाके केसंग में खोदासो, पपुमपारे में तपियसो, लोअर सुबनसिरी में दिलीपजी, कुरुंगकमे में आम्पोजी, कामले में मिथे, करादादी में गिम्बा, और अपर सुबनसिरी में बतक जिराम, सी योमी में देशंगतांग, वेस्ट सियांग में बोजेलिते, लेपरादा में इसीरिते, सियांग में सुप्ले, लोअर सियांग में बालिसोरी, ईस्ट सियांग में मेर, अपर सियांग में कोमकर, लोअर दिवांग वैली में अनपुम, दिवांग वैली में अलिनी, लोहित में तमला नगर, अंजो में मेसाई, नामसाई में एम्पुम, चांगलांग में लोंगपांग, तिराक में पंदुरिया और लोंगदेंग में ओतम दुखिया। सर इस प्रकार जो हमें जो आईबी स्कूल की जो बनाने के लिए जो लागत है, इट्स मोर देन 77 करोड़, तो हमें 10 करोड़ मिला, तो इसमें हमने पेज वाइज करके हमने 8 स्कूल को इस साल शुरू करने के लिए लिया है। उस 8 स्कूल में से सर हम वेस्टर्न सेक्टर से शुरू किया है, वेस्ट तवांग से लेकर जो जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट आता है 8 स्कूल इस बार हम टेकअप किया, और आज की टेंडर भी हो गया, और पेज वार जब हमें जो एलोकेशन आएगा तो बाकी जितना भी है पेज वाइज में सर हम करेंगे। तो इसी प्रकार सर तिराप का भी इस स्कूल में लिस्ट में सर। अब सीरियली कर रहा है क्या सर? तवांग से लेकर सीरियली करे सर। सीरियली नहीं करके थोड़ा नीड बेस में करने से अच्छा है ना। देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट व्हिच रियली नीड प्रॉपर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। उसको सर हम एग्जामिन करेंगे, लेकिन हमने सोचा कि 1 एन से तवांग से लेकर 1 एन से शुरू करेंगे। और एल्स वन गो में आप अगर सैंक्शन करता है तो अच्छा है, बट इफ यू डूइंग इट फेज वाइज, you know, it will be it will make more sense if you go by need base. Sir. One more supplementary, sir. As per the statement of the Honorable Minister, some amount had been sanctioned for the IB schools. A limited amount and a limited resource was mobilized. Now, from what I gather information and what you have also said, the start is from the west to the east. But the sun shines from the east to the west. So it should have started from the east side. And what your view is also quite correct, that I think the need base it should be. The education, condition, especially of the TCL region, is quite backward comparatively. So as I said, it should have started from the east. Anyway, it's for the minister to judge. I only I will presume that he will take proper and adequate action, that other schools are also started as soon as possible. Thank you. That was a supplementary or just a speech? Okay. Anyway. It should have started from the east to the west. Suggestion. If we wait for that, I think it will take up 10 years to reach the east. मिस्टर स्पीकर सर, उनकी जो हम नोट कर लिया है। अच्छा। लेकिन अगर हमें सर इस साल में अगर पूरा बजट मिल जाए तो हो सकता है हम पूरा ही स्कूल ही टेकअप करें। बहुत अच्छी बात है। प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ हमारा एलोकेशन के ऊपर है। एलोकेशन अगर हमें मिल गया तो हम पूरे स्कूल को ही टेकअप करेंगे। That's very soothing to the ears. Thank you. तो next is start question 40. Sri Nabam Tuki. This is regarding star question number 40. मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा था ABCDE, जवाब तो दिया है, और मैं सप्लीमेंट्री में एक वो जानना चाहता हूँ कि जो अभी वर्तमान FPPCS का जो चेयरमैन और मेंबर्स जो अपॉइंट हो चुका है वो क्या स्टेटस में है? अभी फंक्शन है या नॉन फंक्शन है या उसको हटाया गया है? Honorable Chief Minister. Honorable Speaker, sir,
सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो ऑनरेबल मेंबर श्री नबम तुकी साहब ने जो यहाँ रखा कि अभी का जो पब्लिक सर्विस कमीशन मैटर में सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर का स्टेटस के बारे में उन्होंने सप्लीमेंट्री के रूप में पूछा है। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन और मेंबर्स का ऑलरेडी गवर्नमेंट ने तो कर दिया था, मगर यहाँ में जो प्रदर्शन जो हुआ है और जो एस्पेरेंट्स लोगों का मेमोरेंडम का मुताबिक, उन लोगों का रिक्वेस्ट के मुताबिक वो लोग चाह रहा था कि इसमें दोबारा से एक सिलेक्शन कमेटी बनाया जाए और मेंबर्स चेयरमैन को और मेंबर्स का दोबारा फिर एक सिलेक्शन प्रोसेस में डाला जाए। तो एनीवे लोगों का पॉपुलर डिमांड को देखते हुए कैबिनेट ने जो अपॉइंटमेंट किया था उसको लर्नेड सीनियर एडवोकेट जनरल का व्यू लेते हुए उसको हम लोग ने ये खारिज कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो हुआ था मगर स्वेयरिंग इन नहीं हुआ था, तो इसलिए उन लोगों का अपॉइंटमेंट जो है कैंसिल हो गया है। तो इसका वैसे आई थिंक बजट डिस्कशन या गवर्नर एड्रेस में भी डिस्कशन करेंगे तो डिटेलली वहाँ पे हम रखना चाहेंगे। थैंक यू। Thank you. Start question 5, Sri Ninong Iring. Honorable Speaker, sir, the details of the reply have already been given, and of course this is an issue of the central government, but when we are seeing that China has already built up a lot of infrastructure along the border areas of a state, I would like to know from the Honorable Chief Minister or from the Honorable Finance Minister what provisions and additional provisions are you making so that the people in the border areas do not make a shift towards the towns or the plain areas and they stay there in their own boundary areas, so that we can give what kind of provisions, what kind of development activities can you take? Like now you have all taken a very challenging scheme of building the roads right from Tawang to Longding. So what other provisions are there that you are going to take up in these border areas of China, Myanmar or Bhutan? अध्यक्ष जी, ये जो बॉर्डर एरिया बोलने से जो हमारा एलएसी से लेके जो पहला जो गांव है उस गांव से लेके 50 किलोमीटर तक जो एरिया होगा उसमें हम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट करेंगे। हम ये हमारा पॉलिसी है एज पर बॉर्डर एरिया। और चाइना का तरफ से आपने पूछा है क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो तो हमें मालूम नहीं है उस तरफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि हमारा तरफ हम क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो आपको बता भी दिया हूँ, मेरा रिप्लाइज में पूरा है कि बॉर्डर एरिया में हमने क्या क्या लिया, स्कूल क्या क्या लिया, एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या लिया है, फिर मॉडल विलेज बॉर्डर एरिया में कैसे लिया है, किस तरह का है, मॉडल स्कूल किस तरह का लिया, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पूरा का पूरा लिया है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बीएडीपी है, बीएडीपी का फंड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 सितंबर से ये फंड प्रोविज़न बंद कर दिया है, फंड प्रोविज़न बंद कर दिया है। उसका बदली में एक नया स्कीम लॉन्च किया है, वाइब्रेंट विलेज, और ये जो है यूनियन बजट में ऑलरेडी अनाउंस किया गया है। ये इंडो तिब्बत बॉर्डर, या नॉर्दर्न बॉर्डर बोलता है उनको, इंडो तिब्बत बॉर्डर के लिए है ये। और मॉडलिटीज़ अभी तक बना नहीं है उसका, वाइब्रेंट विलेज का। तो जब मॉडलिटीज़ हो जाएगा सो हमें आशा है कि हम अरुणाचल प्रदेश में
बॉर्डर एरिया में अंडर वाइब्रेंट विलेज और प्रोग्राम ले पाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी आपको आश्वासन देता है कि हमारा ये वाइब्रेंट विलेज का तहत हम अरुणाचल का सरकार का तरफ से भी हम टॉप अप देंगे, उसके लिए हम जरूर करेंगे। और एक बात है कि आपने सरकार अदर देन बॉर्डर एरिया हम क्या क्या लिया है। हम 2022-23 में ये अनाउंस किया रहा बजट में गया साल कि 50 स्टैंड अलोन माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट हम लेंगे। उसमें से 17 का काम चल रहा है, वो अभी मार्च में ये जो है ये कंप्लीट होने का हमारा है। ये जो है ये जो LAC का जो है 23 ये है, ये हम 17 आर रेडी एंड विल बी कमीशन बाय मार्च 2023। ये 17 जो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट है मार्च 23 पर। और अच्छा खबर है कि सबसे LAC का करीबी जो गांव है जो है वो डीचू हाइड्रो प्रोजेक्ट, वो काहो के करीब में है, वो बन गया है, वो हो गया है, अभी कमीशन हो गया है एक सप्ताह पहले, 2-3 दिन पहले। और एक है म्यांमार बॉर्डर में प्रीतनगर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वो भी कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा प्रयास है कि डी माइग्रेशन हो। मेरा बजट स्पीच में भी आपने देखा होगा हम काफ़ी डी माइग्रेशन में हम सफल हुआ है, क्योंकि सड़क बन रहा है। एक तो सड़क है हमारा जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे बन रहा है, अभी तो कुरुंग में तो कितना अच्छा रास्ता चला गया। अभी एक सरकार का ये तो बजट डिस्कशन में तो आएगा ही, मैं तो बोलूँगा फर्स्ट टाइम पेमा खांडू सरकार में ये टाली तक कितना पिछले 17 साल से जा नहीं रास्ता पहुँच नहीं है, अभी पहुँच गया है। तो उसमें भी अभी डी माइग्रेशन लोकल MLA बोला है कि मेरा यही प्रयास होगा कि हम डी माइग्रेशन हमारा ईटानगर में जो लोग हैं हम वापस ले जाएंगे उसे और उसमें सुविधा देंगे। तो उसमें जो सुविधा प्रावधान दरकार होगा सरकार उनको ज़रूर मदद करेगा। ये है। उसका अलावा हमने गया साल हम 3 जो है जो मॉडल विलेज का जो अनाउंस किया रहा, वो मॉडल विलेज भी हो गया है हमारा। ये वो है काहो, किबिथु और मैसाय, वो बन गया है। और आने वाले समय में और हम प्रावधान है हमारा, हम इस तरह का मॉडल विलेज मॉडल गांव ले लेगा बॉर्डर एरिया में। इस तरह का हमारा जो बजट में भी प्रावधान है हम लेंगे। उसका अलावा अभी 44,000 करोड़ का भारत सरकार ने सैंक्शन किया है जो फ्रंटियर हाईवे के लिए। साथ ही साथ जो कॉरिडोर कनेक्टिविटी है, CO हेडक्वार्टर हो, EAC हेडक्वार्टर हो, ADC हेडक्वार्टर, उसका कनेक्टिविटी के लिए इसमें इंक्लूजन है। तो हमारा CO जो अनकनेक्टेड जो है एरिया है उसमें हम कनेक्टिविटी लाएंगे, तो ऑटोमेटिक डीमाइग्रेशन होने का हमारा बहुत आशा है, उम्मीद है, और इसी उम्मीद का साथ हम काम कर रहा है। तो आपका जो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शायद आप भी चर्चा करेंगे बजट डिस्कशन में। जो भी होगा हम लोग एक साथ मिलके बॉर्डर एरिया को एज ए टीम अरुणाचल हम अच्छा से अच्छा सुविधा देगा, ताकि वहाँ का लोगों का जो पूरा का पूरा सुविधा अच्छा सुविधा मिले उनको। The question hour is over now. We will go to the next item. Honorable members, I have received a request for leave of absence from Srimati Gumtaeng, Sri Kumsi Sidiso, Srimati Jumumete Duri, Sri Kariko Kri, and Sri Biuram Wage for 9/3/2023, and I have allowed their leave. Now we'll take up bills for consideration and passing. Sri Chonamen, Deputy Chief Minister and Minister in charge of Tax, Excise and Narcotics, may move the motion for consideration of the Arunachal Pradesh Goods Tax Amendment Bill 2023. Honorable Speaker, sir, I move that the Arunachal Pradesh Goods Tax Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Members desiring to take part in the amendment bill may do so.
I think there's no one. So now the Deputy Chief Minister and Minister in charge of Tax and Excise and Narcotics may reply if you want to. If you want to reply, or maybe we can go for consideration. Then we can go for consideration then. Whichever the honorable members like to Then we will go for consideration. pass. For consideration, I'll just, Okay. so the question is that the bill be taken into consideration. So you can sit. I rise to move that the Arunachal Pradesh Goods and Tax Amendment Bill 2023 be passed. So the question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion for consideration of bill is adopted. Now we'll take up clause by clause for consideration of the bill. The question is that the clause 2 to 4 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 2 to 4 stand part of the bill. The question is that the clause 1, enacting formula and the short title and the commencement do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the short title and the commencement stands part of the bill. The Deputy Chief Minister and Minister in charge of Tax and Excise, Narcotic may now move the motion for passing of the bill. Honorable Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Goods Tax Amendment Bill 2023 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. And the bill is passed. Now we'll take up the Arunachal Pradesh Drinking Water Catchment Area Protection Bill 2023. Sri Wangki Loang, Minister of Public Health, Engineering and Water Supply, may move the motion for consideration of the bill. The Arunachal Pradesh Drinking Water Catchment Area Protection Bill 2023. Speaker, sir, I beg to move that the Arunachal Pradesh Protection of Drinking Water Catchment Area Bill 2023 be taken into consideration. Members desiring to take part may do so. Wanglin Longdong. Thank you, Speaker, sir. I would like to participate in the Catchment Area Protection Bill 2023. We all know that in spite of our planet being covered largely by water, only about 3% of the Earth's surface is fresh water. And out of that, only 1.2% can be used for drinking purpose. Which comes from mostly the rivers, rivulets, and the small streams. The others are confined to glaciers and other areas. Now, this water catchment bill is a need of the hour. Arunachal also cannot escape from this scarcity of water which we see in almost all the villages, particularly in the Patkai hill range. According to the scientists, there is a
statement from them which says that by 2050, the entire water source of the Patkai range will dry up. Now, we don't want that to happen, because water is the very essence of life. Without water, there can be no life. So the best way to protect the little resources that we have, the rivers and the streams of our state, is to provide each and every source a catchment area. Now, catchment area pertains to the preservation of that particular area from where the source originates, the drinking water source. We can do it by afforestation or the ANR plantation, nursery improvement, grazing land, and other such activities which will prevent soil erosion, degradation of the plantation that surrounds the source. But what I've seen recently, and also the habit of our people, is that wherever the source of the water supply is, people tend to cultivate, people tend to make the villages and the houses there, especially in our area. And the ultimate result is that the source dries up. Even now, there are many villages, of course, the PHE has taken pains, the Jan Jeeval program is in full swing, and water pipes are being laid down. But what does the purpose of the water pipe serve when there is no water at the source? So our ultimate interest, our ultimate aim is to preserve that source with the water. There is potential for our very survival. So the department which has come up with this very important act of preserving the catchment areas and also actively utilizing the source is very proper and timely. But then certain restrictions and orders has to be initiated by the administration and also the village authorities. And after the mobilization of these areas into a catchment area, who will look after the plantation, the grazing land, and also the ANR forestation that is to be done? Whether it will come under the purview of the PHE department, the administration, or the forest department. I think there should be a combination of all the 3 or 4 departments and also the village authorities. The people must be made to understand the need to preserve the water. A drop of water will count. And we have to realize that one day, entire state may be dry. So when the bill is being enacted, but I think there should be a follow-up action, not only paperwork. So the requirements are that particular areas, some areas should be earmarked for the catchment area. Proper fencing should be initiated. And also, if required, land compensation to the villages from where the source derives, they also need to be taken into fold. And if possible, compensation also paid to them. So these are the steps which should be taken to preserve our water source, especially in our area. So I endorse and I support this bill, and sure that the PSD department will take it up in full swing. Thank you. Honorable Deputy Speakers, I too wish to take part in this particular bill.
which is very, very interesting, and then in fact this is the need of the hour. बहुत ज़रूरी है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में हमारा जो कैचमेंट एरिया है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं इसमें इस हाउस को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट हैव डेडिकेटेड फंडिंग, क्योंकि वी रिक्वायर दोस डेडिकेटेड फंडिंग टू स्पेशली मोटिवेट एंड एनकरेज द कम्युनिटीज़ टू कम फॉरवर्ड टू डोनेट लैंड। क्योंकि कोई भी वॉलंटरीली हम मोटिवेट करेंगे कि इनको वॉलंटरीली लैंड डोनेट करना चाहिए, और उसके लिए एक प्रकार का इंसेंटिवाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो उसमें कम से कम मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट वी मस्ट हैव अ डेडिकेटेड फंडिंग अमाउंट ऑफ एटलीस्ट ₹75 crore annually, which may be considered by the state government to take up various activities, especially that would contribute towards source sustainability, especially keeping in mind the critical areas, critical sources, which may be identified by the concerned department in due course of time. And from this amount, at least ₹1 crore per district could possibly be maybe earmarked as annual award money, क्योंकि इनका इंसेंटिवाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक चीज़ है यहाँ पे जो लिखा गया है कि development of drinking water catchment protection area protection, but the land so donated shall not be used for any other purpose, and no compensation shall be paid for such donated land. We must ensure that there should not be any kind of compensation, because in Arunachal Pradesh we had enough of compensation thing actually. So we should not, let's hope that there is no another new chapter of giving compensation is started in Arunachal Pradesh. Then in second para में ये लिखा गया, provided that in extreme circumstances wherein the livelihood of an individual community, as the case may be, is affected due to such earmarking and donation of land, the district board may determine the compensation to be paid, which however shall not be claimed as a matter of right. तो ये सही है, लेकिन but thing is this, again when we are talking about that no compensation should be paid, at the same time we are still giving a scope कि वहाँ पे अगर लाइवलीहुड इफेक्ट होता है, कि इंडिविजुअल का इफेक्ट होता है और कम्युनिटी को इफेक्ट होता है, तो उसको देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर इस प्रकार का स्कोप रखता है तो देयर वुड बी एक होर्सा लग जाएगा कि सबको कंपेंसेशन, किसको नहीं चाहिए, सभी को कंपेंसेशन चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में आज तो हम डेवलपमेंट इसीलिए सफ़र कर रहा है क्योंकि हमने एक कंपेंसेशन दे के दिखा दिया है। अभी होर्सा लगा हुआ है, सबको चाहिए कंपेंसेशन। अभी आप ये बताइए कि कौन ऐसा नहीं है जो किस चीज़ को कंपेंसेशन नहीं चाहिए। तो ये तो एक बुखार सा चढ़ जाएगा बाद में। तो ये बहुत बड़ा एक हमारा जो एक सिंसियर एफर्ट्स का एक डिरेल होने का बहुत चांसेस है, ये सबोटेज होने का बहुत चांसेस होता है। तो लिहाजा मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो कंपेंसेशन का कहीं भी जिक्र नहीं होने से ठीक है, जो पानी जो है सबको चाहिए। अभी हमें खुद पीने के लिए पानी अगर हम बचाएंगे नहीं तो कौन आके बचाएगा। तो the thing is this, instead we should ensure that there is some kind of funding, actually sufficient funds should be given so that there is incentivization होना चाहिए। And then we have already criteria, जैसे बहुत अच्छा ये criteria इसमें इस bill में propose किया है कि initially 5 best villages annually in the district would be honored. The best villages shall be selected based on the scorecard to be determined by the board on the following. तो weightage रहेगा हमारा कि जो faster land donation और फास्टर जल्दी कौन जमीन देगा उसको प्रायोरिटीज दिया जाएगा, इंक्लूडिंग वेटेज ऑफ एरियाज। तो जमीन आप एक गांव एक कम्युनिटीज कितना जमीन देंगे उस पर आधारित रहेगा इनको ऑनर करने का, इनको ये आइडेंटिफाई करने का। देन इनिशिएटिव्स टेकन बाय द विलेज और विलेजेस फॉर अपकीपमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन द कैचमेंट एरियाज, इनिशिएटिव्स टेकन बाय द विलेज or villages on rainwater harvesting measures, initiatives taken by the village or villages on any innovative application like combining ecosystem and biodiversity conservation with water conservation to make the protection of catchment area sustainable. तो हमारा जो है जो भी इनिशिएटिव है वो सस्टेन होना पड़ेगा, and there should be rigorous exercises especially on this thing to sensitize the people, to motivate the people. And that's why I would reiterate again that until and unless we keep certain fund provision, sufficient fund provision to motivate the farmers, while we leave aside the compensation, we should stop talking about compensation, but instead talk about incentivizing those villages so that they come forward voluntarily and donate those lands.
एंड इसमें कुछ और एक है कि हमारा जो मिनिमल जो एक लैंड को लेकर के जो एक अर्बन सेमी अर्बन देन रूरल एरियाज में जो एक पैरामीटर्स जो लैंड का जो पैरामीटर जो साइज जो डायमेंशन का बारे में जिक्र किया है, मैं तो ये बोलूँगा कि कोई एक अगर 5 हेक्टर छोड़ दो 50 हेक्टर्स भी देता है, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि वी शुड अंडरस्टैंड वन थिंग दिस दैट until and unless we have the geohydrological survey of those particular areas, हमें कोई ये हम निश्चित रूप से नहीं बता पाएंगे कि कितना ज़मीन पे कितना कैचमेंट एरियाज होने से हमारा जो मॉइस्चर सही मॉइस्चर मिलेगा हमारा जो कैचमेंट एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ प्योरली साइंटिफिक। तो लिहाजा हमें बहुत ज़रूरी है कि हमको कि एज मच एज पॉसिबल लैंड हमें एक बार अगर विलेजर्स लोग आकर के डोनेट करता है, ऑफर करता है, उसको ले लेना चाहिए। तो मिनिमम तो है ही है, लेकिन मैक्सिमम में कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। अगर देता है कि 100 हेक्टर्स भी दे देता है गांव वाले, तो हमें ले लेना चाहिए, बिकॉज जस्ट मेयरली क्रिएटिंग दिस थिंग ग्रीन स्ट्रिप्स ऑन द साइड्स बाय द साइड्स ऑफ द रिवर्स एंड रिवुलेट्स कैनॉट गिव अस दिस गारंटी दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस थिंग secured place, secured catchment areas, because water beneath the ground, it behaves in a very peculiar manner. We have to study कि हमारा नीचे में जो प्लेट्स कैसे पड़ा हुआ है, उसमें रॉकी पोर्शन कैसे है, हमारा एक्वाफायर का कैसे बिहेव करना कैसे है, वो सब एक्चुअली जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर इसमें हमने देखा कि वो वाला चीज़ नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन एटलीस्ट वी कैन कीप दिस इन माइंड दैट वी एक्वायर लैंड एज मच एज पॉसिबल सो दैट the water sources is secured in future as well, because we all know, मैंने बार बार इस हाउस में सदन में मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में, जैसे मैंने बता रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत स्ट्रीम्स है, रिवुलेट्स है, रिवर्स है, छोटा छोटा नाला नलियाँ है, लेकिन हर नाला नलियों का हम जो हमारा ट्राइबल कम्युनिटीज़ उसको नाम से पुकारते थे, लेकिन अभी ये समय आ गया कि ए और नाला का नाम खत्म हो गया। नाम इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि ऑल द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आर डिस्टिंक्ट रिवर्स द स्ट्रीम्स रिवुलेट्स एंड ऑल दिस आर ड्राइंग अप। तो हमें बहुत जरूरी है, इट शुड बी द वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट that we secure our water sources. This is very important, and I have already said in my last distinct deliberations as well that the water sources, especially the melting glaciers in the Tibet region, is very, very alarming. We normally used to say this climate change and global warming is something that is happening in European and other Western countries. But हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो भी वाटर क्राइसिस हो, जो ग्लोबल वार्मिंग का हो, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट जो है हमारे घर के चौखा तक पहुंच चुका है। तो हम आशा करते हैं कि people of Arunachal Pradesh would be really enthused by this particular act, and then at the same time I would request to the government that we keep certain fund provisions so that we can sustain our movement, we can sustain this wonderful initiative that is being taken up by the government, and also to ensure that our incentivization process, there is no end to this thing, and then more and more villagers would come forward, and therefore with these suggestions I would like to conclude. Thank you, Deputy Speaker, sir. Mr. Deputy Speaker, sir, while supporting the bills, the Arunachal Pradesh Protection of Drinking Water Catchment Areas Bill 2023, I would also like to throw some lights on the bill. As you know, there are 4 types of water: surface water, groundwater, wastewater, and storm water. But in the context of Arunachal Pradesh, the main sources of water in Arunachal Pradesh is various rivulets and spring waters. And now it is the necessity to frame the policy on the water by the state government. So it is the need of an hour. The bill has been introduced today. Why? Because for environmental balance, skillful and planned management for all types of developmental activities, economic use on equitable basis, and in view of the time importance of water for all human and living beings are required as of now. Therefore, the Government of India has also adopted first National Water Policy in 1987, and from time and again it has been changing year by year. In the policy of 2002, it has been said that water is a prime natural resources
a basic human need, and a precious national asset. Therefore, keeping in view all these things, the government of India has also first adopted on water policy. The act was the Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted in 1974 for prevention and control of water pollution, and which was amended in 1988. Now, I will come into the importance of this act as my esteemed colleagues, Gabriel sir has already pointed out. I have gone through all pros and cons of these bills, and I am fully endorsed with these bills. And while supporting the bills, I would just point out some suggestions so that this can be incorporated if necessary. As bill has been amended, framed, but no provision has been kept for fund. Just saying about defense on the MAPLA, MLA-led and MP-led. But instead of that, my suggestion would be at least dedicated fund be prepared from the state exchequer so that as and when we record, the catchment areas can be fully and well maintained. And that apart, award under section 6 sub-clause 3 in the bill, it has been incorporated that award would be given. So, as it has already been mentioned, my suggestion would be, since it has been provided to give award to the villagers, so my proposal would be at least 50 lakhs funds should be given for first awardee, so that at least all villagers will keep in mind that in order to get the funds, they will work on the war putting and as and when required, the land can be donated by the villagers. And that apart, rain water harvesting policy like that of EB, that as last time when we had Bascon program that we have visited, that EB project like that of policy should be adopted by the all districts so that at least rainwater harvesting can be taken place. But in this bills, such policy has not been adopted. If possible, it should also be incorporated. As you know, ranked based on percentage of households which have access to the safe drinking water, the percentage of water in Punjab is at 97.6%, and our Arunachal Pradesh is only 78.6%, and Kerala being the worst is at 33.5%. As you know, the main source of taking water is dry bullets, rivers, and spring water. If we not maintain now, in days to come, our future generations will certainly face the water shortage, and as the water comes from all mountainous regions, and if it is all trees and plants all are fell down, certainly one day the drought will come down. Therefore, in Section 8, function of District Executive Committee has been prescribed. In this provision, the PhD department has been made as executing agency for taking up this project. So whether the PhD department will be capable to deal with these such situations to maintaining the ecosystem or maintaining the forest, as there is a forest department who is taking care of the forest and rivers, then if they can maintain, it's all right. Otherwise, we can also think over on this issue, whether
the PACD department should be kept as an executing agency to take up the Arunachal Pradesh protection of drinking water catchment areas, or the forest department, or WRD department. But in my view, since forest department is well aware of the forest, so it will be the better part that the forest department can be kept as an executing agency for them. And that apart, since water, we need a safe and potable water for existence. Therefore, if possible, the pollution part should also be added, that it has not been whispered about how to prevent fresh water, that has not been mentioned. So how to control the pollution part should also be incorporated in these catchment areas, so that we can have potable water for years to come. With that, I fully endorse the bills and support that all friends should also support these bills, so that for future generations can have drinking water without much troubles and hardship. Thank you. Next, Tana Halini. ये मैं 14 डोईमुख की MLA होने के नाते मैं थोड़ा ये बिल का बारे में बिफोर पासिंग द बिल उसको मैं सपोर्ट करते हुए ऑनरेबल मिनिस्टर PHE ने जो ले किया गया है बिल को, उसका सपोर्ट में मैं ये कुछ बोलना चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट ये मैं बोलना चाहता हूँ, जहाँ भी प्रोजेक्ट होने के पहले कि उसको चाहे LPC हो चाहे अलॉटमेंट हो में बनाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जो मैप नहीं बनाएगा या उसको नोटिफाइड नहीं करेगा तो कल कोई भी आदमी क्लेम हो सकता है कि ये एरिया है। और इसलिए हम बोलना चाहता है कि सारा ईटानगर का जो पानी का सप्लाई जो है हमारा एरिया से आता है, पामा रिवर से, तो ये मैप और या उसको नोटिफाइड नहीं किया गया है तो कल कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए जो प्रॉब्लम को आने का पहले इसको समाधान लेना है और सॉल्यूशन लेके आना है। और साथ साथ में ये भी मैं बिल का सपोर्ट करते हुए ये बोलना चाहता हूँ इस सदन में कि हमारा डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से जहाँ प्रोजेक्ट इफेक्टेड एरिया है उसका एरिया का जो इफेक्टेड आदमी लोग को भी कुछ ऐसे फैसिलिटी मिलना है कि ताकि वो लोग भी कुछ बेनिफिट मिले, जैसे फ्री वाटर सप्लाई कनेक्शन होना चाहिए जो, क्योंकि उसको भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी या फैसिलिटी नहीं देगा तो बाद में जा करके वो प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि हम जो पेश कर रहा है और देख रहा है, जैसे हमारा एरिया से यूपिया से नाहरलगुन को सप्लाई देता है, तो जो जो पानी जहाँ से प्रोजेक्ट आ रहा है और जो कर रहा है, इसको हम बिल को सपोर्ट करते हुए मेरा यही सुझाव है कि सरकार वो चीज़ को प्रिकॉशन पहले ही उसको ले लेने से ठीक है। और जो जहाँ जहाँ जिस वैली में और जिस नदी से जिस स्ट्रीम से पानी जब सप्लाई ले रहा है तो उस बेसन का फॉरेस्ट एरिया को
स्ट्रिक्टली सरकार की तरफ से एक प्रोहिबिशन, एक नोटिस या उसका अवेयरनेस पब्लिक को देना चाहिए। यदि वो चीज को अवेयरनेस या पब्लिक को नोटिफिकेशन या कुछ अवेयरनेस नहीं देगा तो कल डिफॉरेस्टेशन होगा, तो कल वाटर सप्लाई का जो चीज में बहुत सा चीज प्रॉब्लम आ सकता है, और बाद में जा करके हमारा एरिया एमएलए को, एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर को बदनाम भी आ सकता है। तो इसलिए मैं इस सदन में हमारा जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से मैं ये सोचना देता हूं और सजेशन देता हूं कि सरकार इस चीज को ध्यान देते हुए कि बिल को, हमारा सदन का जितना मेंबर्स लोग को भी मेरा यही अपील है कि इसको बिल को पास कर देना है, और हमारा यही सुझाव से हमारा बात को इधर विराम रखता हूं। थैंक यू। Thank you. Any member? Then, now the Honorable Minister of PHC and Water Supply may reply. Thank you, Honorable Deputy Speaker, sir. In fact, it seems the House is in agreement with this bill. So, just I would like to highlight few points why this bill has been brought into. The state has achieved development in different sectors under the leadership of our beloved Chief Minister Sri Pema Khanduji and the elderly advice of our Deputy Chief Minister Sri Sonamenji in all the fields. But our development in due course taking place will face a problem if there is no water supply. I think it is known to everyone that no living being can survive without water. And the trend we are seeing, the depletion of water sources due to global warming, climate changes, and local factors like deforestation for different purposes of the catchment areas, for which we need to take a far-sighted decision now so that we can leave water for our next generation. They will be comfortable in times to come. We have carried out prior consultation through Deputy Commissioner of the district, and also tried our best to interact with all the honorable MLAs of this house by inviting even written inputs. The proposed bill is aimed at reversing the present trend of water depletion through various conservation activities and preservation of natural resources. The bill envisages participation of various stakeholders with the constitution of state level board, district level board, and a committee at the village level. In another word, this bill is a kind of a bill where we are activating people's participation. Even if the catchment area is not to be notified, it has to come right from the village level. They will propose, they will survey and decide which area is to be notified as catchment area.
So we are empowering the people at the lowest level. The state government or the district level committee will work as per the recommendations of the village level committees. So since it is their land, it is not in conflict with the landowners. It is in cooperation with the village or the landowners that any project can be successful. And as the different participants have suggested, their suggestions have been taken note of, which can be considered to include or to improve the provisions of this Act when such amendments are made from time to time. Regarding the protection of this catchment area, many members have expressed their dilemma as to who will be the appropriate authority to take care or to manage that catchment area or to look after that catchment area or to implement. I think it is the people who will take care of it in coordination with the district administration, in coordination with forest department, and I think we have suggested to take on board, in fact, every department in the district level committee. And since it is, in one way, it is a complement to the other acts, it will be implemented in consonance with the other existing laws. Therefore, the measures of protection, everything has been cleared, mentioned here very clearly. The 12, serial number 12, which is of this Act, measures for protection of drinking water catchment areas. On declaration of an area as drinking water catchment area under Section 11, the government shall have the power to take such measures as it deems necessary and or expedient for the purpose of protecting the catchment area. In particular, and without prejudice to the generality of provision of the subsection 1, such measures may include all or any of the following matters, namely planting, advising planting of trees and taking up of other steps. So this you can, I think it's long, that's why I have not read out, but it is there in the Section 12. And offences being part of the protection of this catchment area, even the offense will be reported by the village committee and punishment or fine will be imposed by village committee, and we have suggested that even the fine imposed, 80% of the fine imposed will go to the village fund. So these are the ways we are trying to take on board the landowners, the village who will be affected. And in case of pollution, it is there in the Section 20 of this Act, subsection 3, in case related to pollution of water sources, it shall be governed by the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Therefore, some apprehensions or suggestions, I am trying to clarify the apprehensions of the honorable members, the participants, which they have expressed during the course of their deliberation. Other points
like funding and incentivization. I think that can be taken care of later on also by the state government from time to time. And with this this brief explanation from my side, I would like to request the August House to pass this bill as a token of gift to our future generation, so that we do our bit to preserve the water source of the drying rivers. Thank you, Deputy Speaker. Now, the question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now, I will take up clause by clause for consideration of the bill. The question is that clause 2 to 22 do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 2 to 22 stand part of the bill. The question is that clause 1 enacting formula and the short title and commencement do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the short title and commencement stand part of the bill. The Minister of Public Health, Engineering and Water Supply may now move the motion for passing of the bill. Deputy Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Protection of Drinking Water Catchment Areas Bill 2023 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The Arunachal Pradesh Drinking Water Catchment Area Protection Bill 2023 is passed. Item number 2, Part 3, the Assam Frontier Administration of Justice Regulation Amendment Bill 2023. Sri Pema Khandu, Honorable Chief Minister and Minister in charge of Law, Legislative and Justice may move the motion for consideration of the Assam Frontier Administration of Justice Regulation Amendment Bill 2023. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to move that the Assam Frontier Administration of Justice Regulation Amendment Bill 2023 to be taken into consideration. Member who desire to take part in this discussion on the bill may do so. Yes, Yama Karbakji, Honorable MLA. Thank you, Deputy Speaker, sir, for giving me a chance to participate in Amendment Bill, the Assam Frontier Administration of Justice Regulation Amendment Bill 2023. Sir, I must congratulate our government for bringing this amendment bill after 78 years. As all of us know, this regulation was formed in 1947, before the independence, and this bill is totally towards protecting, towards strengthening local bodies in Arunachal Pradesh. At the same time, our customary law of indigenous people of Arunachal Pradesh will be protected under this amendment bill. So I raise here to support this bill. Especially यहाँ पे बिल में जो amendments, especially
पुराना जो रेगुलेशन में तिरप, फ्रंटियर ट्रैक, सोदिया, लखीमपुर, बोरपेटा, इन सब चीज़ को जोड़ा गया है, इसे अभी निकाल कर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एज ए होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश किया है. दिस इज वेलकमिंग स्टेप. The word administrator has been changed by state government. साथ ही साथ यहाँ पे still in the act is mentioning about head Gamburas, head Gamburi, उनका एड्रेस इस प्रकार से है. मैं इसमें सरकार को सुझाव ये देना चाहूँगा, अभी जब हम एक्ट बना ही रहा है, जब हमने रेगुलेशन को चेंज कर ही रहा है, तो वाई वी आर स्टिल कॉलिंग स्टिल बुरा एंड बुरी वर्ड, बिकॉज अभी समय बदल रहा है और बदल चुका है. सरकार के माध्यम से एवरी विलेज इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद 4G नेटवर्क. इन दिस इरा, especially the word bura and buri should not be there, and इसमें गाम, head गाम and गाम, not बुरा बुरी word. इससे थोड़ा सा एक मॉडर्न जवान लोगों को भी इसमें आना चाहिए, पढ़ा लिखा लोगों को भी लोकल बॉडीज़ में आना चाहिए, ताकि चीज़ें और अच्छा हो. Especially in amendment in section 5 of 5(3), section 5 in 3, Para 3, the state government may frame guidelines for all the matters, including election, selection, appointment, power, function, and meeting. Here, I think जो गांव बुरा जो इंस्टीट्यूट है, अगर इसे हम गांव लेवल में इलेक्शन से अगर हम इन्हें पिक करेंगे, तो डिसयूनिटी का माहौल होगा. तो व्हाट आई फील इज इलेक्शन नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी सिलेक्शन ऑन द बेस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. ये एक सुझाव है. दूसरा सुझाव गवर्नमेंट को, गांव बुरा को लुक वाइज कैसे हमें थोड़ा सा मॉडर्निटी के इरा में ले जाने के लिए, स्मार्ट गांव बनाने के लिए थोड़ा लुक में भी थोड़ा सा बदलाव का आवश्यकता मुझे नज़र आ रहा है. स्पेशली द कलर, जितना गांव बुराज है उनका कलर रेड है. रेड खतरा का निशानी भी है और रेड दूर से दिखता भी है, कलर सही है. लेकिन भी एट द सेम टाइम विंटर हो समर हो, सेम टाइप का कपड़ा उन लोगों को दिया जाता है, जो वो चीज़ आज के दिन में देखने में ख़राब लगता है. जब हम गाँव में जाते हैं गर्म दिन में, स्पेशली कड़कती धूप में, वो लाल कलर का दट इज ऑल्सो उलन, उनको उन लोग पहनते हैं, तो इट्स लुक समटाइम वेरी ऑड ऑल्सो. तो इसमें भी कलर सेम रहना चाहिए, लेकिन भी विंटर समर का थोड़ा इसमें वो होने से ठीक है. स्पेशली आई कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट, ऑनरेबल CM, डिप्टी CM, उन्होंने हेड गांव बुरा का 2000 से 2500 किया है, तनख्वाह में इजाफा किया है, और जो गांव को 1500 से 2000 किया है. दैट्स वेरी गुड. एट द सेम टाइम जो पावर का बात है, जहां में इसको टोटली स्टेट गवर्नमेंट के प्रीव्यू में बाद में चला जाएगा, इसमें आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट whenever there is any decision in village level or in a circle level, the present scenario is गांव जो होता है, अभी गाँवों में उनका जो भी केस होता है वो गांव में केस होता है. If somebody has problem, then they are directly going to court. तो इस इंस्टीट्यूट को जैसे पहले हुआ करता था, पहले लेवल का गांव में होना चाहिए, उसके बाद गांव में जो डिसीजन हुआ है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने से सर्कल लेवल में आना चाहिए, सर्कल लेवल में आना चाहिए. फिर सर्कल लेवल शुड बी द एंड पॉइंट फॉर द गांव-बुराज, बिकॉज सर्कल लेवल से अगर कोई नहीं मानता है तो दे कैन गो टू कोर्ट. अनदर डिस्ट्रिक्ट लेवल इज 3 पिलर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है मेरे हिसाब से.
ये गांव लेवल में होना आवश्यकता है, गांव का बाद में सर्कल लेवल में होने का आवश्यकता है। और सर्कल लेवल में अगर गांव बुरा अगर किसी को मीटिंग के लिए समन करता है, 2 बार समन करता है, 3 बार करता है, 4 बार करता है, कोई लोग पर्पसफुली अटेंड नहीं करता है, देन गांव दे यूज टू गिव एक्स पार्टी डिसीजन, तो कोर्ट फिर उसको मान्यता नहीं देता है कि गांव बुरा लोगों ने जो एक्स पार्टी डिसीजन दिया उसको कोर्ट फिर मान्यता नहीं देता है। इस एक्ट में ऐसा किया जाए कि अगर हेड गांव ने जो डिसीजन लिया है उसको सब मानना चाहिए। और उसके बाद जो एक प्रावधान था पहले बांगो सेक्रेटरी का, क्योंकि एक सर्कल लेवल में सर्कल हेड जीबी होता है, सर्कल हेड जीबी के साथ काम करने के लिए एक बांगो सेक्रेटरी होता है जो कागज़ बनाता है, लोगों को बुलाता है। तो एटलीस्ट प्रावधान में ऐसा हम लोग को प्रबंध करना चाहिए, एटलीस्ट बांगो सेक्रेटरी लेवल में एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मान्यता हो, और उसके बाद he or she should know how to operate computer also, and they should have a WhatsApp group kind of thing कि इस प्रकार से थोड़ा सा मॉडर्निटी में ले जाने के लिए इसका आवश्यकता मुझे दिखाई देता है। तो at the end I support this amendment bill 2023, and at the same time I congratulate all the Gam Buras and Buris, those who are in the entire Arunachal Pradesh। सरकार इतने सालों के बाद एक दिस गवर्नमेंट हैज़ आई थिंक मोर देन मेनी एक हम लोगों ने पिछले 6-7 सालों में बनाया है, और ये एक ऐसा एक्ट है जिससे लोकल बॉडी एम्पावर होगा, जिससे हमारा इंडिजिनस कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। तो मैं वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट गवर्नमेंट फॉर ब्रिंगिंग सच नोबल एंड सच इनोवेटिव एंड सच माने दिल का गहराई में छूने वाला और हमारे लोकल्स को जिस प्रकार से एम्पावर करने वाला एक बिल असेंबली में लेके आया, और आई एम कम्प्लीटली सपोर्टिंग दिस एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी चांस। नेक्स्ट ऑनरेबल एमएलए कार्डन निकोल जी। Honorable Deputy Speaker, sir, I am Kardonigar, representing 20th Likavali Assembly Constituency, raised here to take part in Assam Volunteer Administration of Justice Regulation Amendment Bill 2023. While supporting the bill, I have some observation. I have gone through the bill and would like to throw some light over the following points. In Section 3 of the Clause F, there is a mention about GBs and head GBs in the village level. For example, if a meeting is convened at a particular village or village council, then automatically head GB of that village becomes chairperson to preside over the meeting. But if the same meeting is convened at the inter-village territorial council or circle level, many GBs and head GBs come together. The selection of chairperson to chair the meeting gets complicated. In the erstwhile undivided West Siang district, in every circle, the then Deputy Commissioner was empowered to appoint circle head GB without any extra entitlements. The circle head GB became chairperson of any circle level or inter-village level meeting. The system was found to be very convenient. So, my submission is that one circle head GB be appointed at circle level with or without additional financial benefit to chair the inter-village territorial council level meeting. My second point is this: the section 11 of the subsection 4 has mentioned about village authority, inter-village territorial council, apex customary court / council. For more clarity, here I would like to suggest some points as follows. Instead of mentioning village authority, inter-village territorial council, apex customary court,
it may be mentioned as village authority at village level, inter-village territorial council at circle level, and apex customary court at district level. For more clarity in the bill. And while supplementing Karbak sir, Honorable MLA Ledumova, I too also feel that the red coat given to Gamburas in the winter and summer should be red coat of winter and summer should be different, as because in our area Gambura used to wear same coat in summer also, in winter also. So it look awkward, and government should make some provision. With this, I concluded my speech here. Thank you, Deputy Speaker, sir. Next, Honorable MLA Tana Soteji. Honorable Deputy Speaker, sir, I rise to participate in this bill, the Assam Frontier Regulation Amendment Bill 2023. इसमें मुझे बहुत खुशी लग रहा है, जो ओरिजिनल रेगुलेशन जो एक्ट है 1945 में बनाया गया, जिसमें हमें जन्म नहीं हुआ था। आज 70 इयर्स का बाद एज ऑनरेबल एमएलए कारबाग साहब से कि उसको हम लोग अमेंडमेंट ला रहा है। जो इस अमेंडमेंट में कुछ अच्छे चीज़ें हैं और कुछ थोड़ा सुझाव भी है। जो पहले जो अरुणाचल का एग्जिस्टेंस इतना क्लियरिटी नहीं था, इसमें ट्रैक एडमिनिस्ट्रेशन करके यहाँ का रीति रिवाज कैसे होता है, जुडिशरी सिस्टम कैसे होता है, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, उसका अध्ययन नहीं था होगा, जो इसको अमेंडमेंट रेगुलेशन एक्ट को लाया गया। आज इसलिए उसका कुछ चेंजेस ला रहा है इस अमेंडमेंट में। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, जैसे ट्रैक्स को जो सादिया ट्रैक्स, लखीमपुर ट्रैक्स, बालीपरा ट्रैक्स, इसको डिस्ट्रिक्ट्स में ला रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और हम इंडिपेंडेंस में आज नेफा युग से भी हम थोड़ा अपना पूर्ण स्वर्ण और इंडिपेंडेंस होने का ये एक कदम है। तो इसमें मुझे भी ये एक ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है कि विलेज अथॉरिटी का जब सवाल आता है तो हम लोग ट्रैक्स के हट करके अपना डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से हट करके जब स्टेट गवर्नमेंट का आ रहा है, जो गांव बूढ़ा गांव बूढ़ीस एंड हेड गांव बूढ़ा हेड गांव बूढ़ीस, ये जो है तो असमीज शब्द है, वहीं से इनहेरिट किया गया है। तो इसको हम इच विलेज का अगर हेड गांवबुढ़ास गांवबुढ़ीस बनाना है तो उसको लोकल टाइटल देने से सही रहेगा। जैसे हम लोग का तगिन भाषा में जो बस्ती में एक्सपर्ट होता है, नॉलेज होता है, ट्रेडिशनल का डिसीजन मेकिंग में हर चीज़ में जो एक्सपर्ट होता है, उसको निकुमकु बोलता है। कोई भी निकुमकु शब्द यूज करता है कि जो ज्ञानी आदमी होता है, वेरी वाइज आदमी, ज्ञानी आदमी होता है। तो उसी टाइटल को अगर दिया जाए तो हम लोग सही दिशा का एक अमेंडमेंट लाएगा, ऐसे सोचता है। जैसे आज कोई एक अच्छा बात है, नो मिंजिंग मिलाक पने ला रहे, अलाक पने ला रहे, अगर वो जो आदमी बुरा हो सकता है बाय एज, बट हिज विजडम इज लिमिटेड। कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग में वो सही नहीं बोल पाता। तो ऐसे लोग होते हैं कि जो एकदम वाइज आदमी है, जो बुरा भी है, एज भी है। ऑफ कोर्स ऐसे वाइज आदमी जो डिसीजन मेकिंग यंग भी जरूर होता है, लेकिन यंग को भी निकुम मुकुट बोलने में थोड़ा सा एक एज साथ मैचिंग नहीं होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ सारा अरुणाचल में जो अपना अपना डायलेक्ट्स में ऐसे एक शब्द होता होगा। तो इसलिए जैसे तगिन में एक निकुमकु,
जो हर बस्ती उस बस्ती का निकू मकू है, वो निकू है, ये मेल को सिग्निफाइट करता, मकू है वो वीमेन को सिग्निफाइट करता। ऐसे लाने से कैसे रहेगा? और इसके साथ आज ये जो अमेंडमेंट बिल जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट एक दिशा में ले जा रहा है, जो विलेज अथॉरिटी को कोई डिस्प्यूट के सॉल्यूशन समाधान करने के लिए जो एम्पावरमेंट दे रहा है, ये बहुत ही अच्छी है। और आज हम लोग का गामड़ा जो निकुमकू के जो ऐसे बस्ती का अथॉरिटी, विलेज अथॉरिटी में हम लोग का काउंसिल जैसे चीज़ नहीं है, कबा जब बेच जाता है उसमें तो बड़ा केस जो है सेटल हो जाता है विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 1 वीक, एट द मोस्ट 2 मंथ्स, एक महीना में तो सारा बड़ा से बड़ा केस सेटल हो जाता है। अगर इस ढंग का जो गामड़ा का हम लोग निकुमकू को या गामड़ा है गामड़ी को अगर एम्पावर किया जाए, जो रशेस इन द जो हम लोग का कोर्ट में रशेस हो रहा है केसेस का, वो भी एक सोल्यूशन में आ सकता है। बहुत से कोर्ट कचहरी में जो रशनेस है उसका सॉल्व हो सकता है। जिस तरह जो कोर्ट में जाने के लिए जो आजकल का रुपया पैसा इन्वॉल्वमेंट है, उसको भी ये एक समाधान दे सकता है। जैसे कारबाग साहब ने जो सजेशन दिया और निगेर साहब ने सजेशन दिया, मेरा भी एक सजेशन है, इसको प्रॉपरली एक इंस्टीट्यूशनल का डायरेक्शन में भी लेके जाने से अच्छा है। जैसे माने उसका सिलेक्शन जो है अच्छा से सिलेक्शन किया जाए। आजकल का जो गामड़ा गामड़ी से में जो है कि हम लोग राजनीति में तौर पे भी कभी कभी अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो वो अपॉइंटमेंट में होता है कि इट्स अ प्रॉपर निकुमकू जो है, जो क्राइटेरिया जो उनका विजडम, स्केल ऑफ विजडम का मुताबिक नहीं होता है, इट इज़ पॉलिटिकल नेसेसिटी में भी अपॉइंटमेंट होता है। तो इसलिए कभी कभी जजमेंट में तो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो आज उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया को भी अगर प्रॉपरली करके उसको प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए तो ये जो है अमेंडमेंट का बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और इसमें यही कहता है कि कभी कभी वो माने मॉडर्न, आज का मॉडर्न कॉम्प्लेक्स है, लैंड डिस्प्यूट कभी कभी होता है, उसी को भी ये जो गामड़ा का इसी ये इंस्टीट्यूशन से सॉल्व किया जाता है। हाँ, कभी कभी राइटिंग की ज़रूरत पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ता है, बट देन ऑल हु कैन राइट, ऑल हु कैन फोटोग्राफ, आज वीडियोग्राफिंग कर सकता है, वो सब तो जो विलेज लेवल का ट्रेडिशनल वे ऑफ सेटलमेंट जो है वो कैपेबल नहीं होता है, इतना उनका पास इतना पारदर्शिता नहीं भी होता है। तो इसलिए जो है एक मेंबर सेक्रेटरी अगर हम लोग उसमें दिया जाए, मेंबर से रख करके, या सीओ को जो एरिया का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को उसको मेंबर सेक्रेटरी के तौर पे रख करके अगर इस ढंग का करने से ये गामड़ा गामड़ी का इंस्टीट्यूशन को हम लोग बहुत स्ट्रेंथन कर सकता है। तो उसको स्ट्रेंथन करते हुए मेरा यही सुझाव है, सजेशन है कि ये गामड़ा गामड़ीज को लोकल इंडिजिनियस टर्मिनोलॉजी देने से अच्छा रहेगा। दिस इज़ माय सुझाव, एंड विद दिस सजेशन आई फुल्ली सपोर्ट दिस बिल। थैंक यू। Thank you, Honorable Deputy Speaker, sir, for giving me this opportunity to participate in this bill, which is very, very timely, and also we would be able to get rid of certain terms and pages which had hindered in flawless execution of the acts. So इसमें ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया है इसमें प्राइमरीली दो इम्पोर्टेंट जो मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आउट ऑफ 5 कि वन इज़ दिस टू इंसर्ट द डेफिनेशन ऑफ विलेज अथॉरिटी एंड एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 5 to include the institutions of head gaon bura, head gaon buri, gaon bura and gaon buri and the traditional village head under the ambit of village authority. ये number 1. Number 2 है आपका to make provisions for framing guidelines by the government for election, selection, appointment, powers, functions and meetings of the gaon bura, head gaon bura, head gaon buri, gaon bura and gaon buri. सब इससे पहले मैं एक चीज़, ये हमारा जो गवर्नर ने जो एड्रेस किया था ऑन 6 मार्च को, उन्होंने इस हाउस को, इस सदन को एड्रेस किया था, उसमें उसको मैं हमारा ऑनरेबल गवर्नर को मैं कोट करना चाहता हूँ
It's a matter of pride for us that the Honorable President noted the vibrant system of self-governance and grassroots democracy which has existed in Arunachal Pradesh for centuries and which is being continued by the active participation of the people of the state in the modern democratic processes. तो मैं इसी को ही कंटिन्यू करते हुए मैं ये इस सदन में ये एक दो चीज़ मैं रखना चाहता हूँ. बहुत अच्छा बिल है, आई सपोर्ट इट, आई फुली सपोर्ट दैट बिल, लेकिन एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ. So when we talk about this traditional, institutions, traditional, councils, I wish to inform you that I would like to suggest that we insert the word Wangham also in the bill. The reason why we should insert the Wangham or the Lowang or the name of the Khamti chiefs or other chiefs in that particular bill is that the chieftainship is basically an insignia of the particular community, especially where their chieftainship is practiced, especially with regard to the Wancho traditional village system. Unlike those Gaumburas or Gaumburis or head Gaumburas, whatever, who are basically being appointed by the government in the recent past after the inception of the administration in our region. The Gaumburas and political interpreters, for example, were appointed just as a link between the public and the administration. They cannot be treated as the head of the village authority, especially in the regions where traditional chieftainship actually prevail, especially in the Wancho, Nokte, and Khamti villages of the state. For example, the Wangham is the traditional institutions of the Wanchos, unlike those surname of any other clan or tribes. Therefore, the words chieftain should be inserted. I suggest that this may be inserted in the bill to authenticate the concept of village headman or the village authority, and also to avoid, I repeat it, to avoid conflict of opinion over the concept of village authority. Because Assam Frontier Regulation, Administration of Justice Act of 1945 empowers the traditional headman or the chief of the village in administering the frontier tracts or the provincial area. Hence, the Wanghams, for example, in Wanchos, and then Lowangs in Noktes and other chieftains of Singpos and Khamtis have carried forward the administration of their subjects even before the advent of the modern democratic and parliamentary form of government in this region. The traditional village council or the Ngowang, which is represented by the chief, is already included in section 5 of this act. But to be specific, Honorable Deputy Speaker, sir, but to be specific, unlike the traditional institutions which are represented by the Gaumburas or Gaumburis or head Gaumburas, it would be in the fitness of things to clearly insert the words chieftains of the Noktes and Wanchos in the act, so that it is not generalized like other village council where there is no chieftainship system. The Assam Frontier Regulation Act 1945 in fact upholds the traditional headman to administer and unadministered areas of our frontier tracts. The mode of selection, election, appointment, powers and function of village council of other tribes may be determined by the government as in section 5, but the traditionally inherited chieftains are not appointed by the government. The chieftains of the Noktes, the Wanchos, as an exception, as a custodian of traditional council, I would suggest be inserted in the institution of village authority. This well-defined safeguard must be incorporated, especially for the tribes having traditional customary village council like Ngowang, where the Wangham is the de facto head of the village. The village authority, as per the present bill, has been generalized by the composition of head Gaumbura, Gaumburi as members, which may be, in fact, be misinterpreted if the particular word as chieftains is not mentioned in the act. Because in areas where there is no traditional institutions or chieftain system, the government appointed Gaumburas or Gaumburis are basically recognized as the traditional village authority, which otherwise that may confuse the lawkeeper in future in terms if the term chief is not incorporated in the bill. And hence, therefore, I would suggest that the word chief should be particularly be incorporated so that in the long run that their confusion doesn't prevail.
while execution of this, while taking up any activities or execution of this particular thing. Second issue, as I have already told, that the purpose of this particular bill is with regard to this thing selection and this thing powers of the Gaunburas and Gaunburis. Honorable Deputy Speaker, sir, I just wanted to make a few points here, especially some of the previous speakers have already pointed out regarding the certain listing, maybe some shortcomings, whatever. Although I support this particular bill, but I just wanted to make few remarks here, that the customary code village authorities in AFR 1945 was adopted mainly to form an alternative dispute resolution mechanism and to mainly assist the administration. It was, in fact, it was never a full-fledged judicial institution. So we need to understand that there is a concrete mechanism to control the conduct and functioning of judges in modern day judicial system to ascertain fair delivery of justice. And this mechanism mostly comprises of qualification of judges, recruitment or appointment processes, conduct rules of judges, judicial ethics, control by higher judicial authorities on conduct and functioning of court based on established rules and principles. And it is because of this mechanism today that the people trust the judiciary of India, that there will be always fair delivery of justice. Now, in the context of the customary court, the main drawbacks are basically, the facts are that most of the Gaunburas or village authorities are not educated and severely lacks in judicial knowledge. Therefore, it has become very difficult for them to reason and logically approach the matter, and ultimately they are more prone to be influenced by powerful people of the society or the village. And also, unlike the recruitment of JMFC, CJM and judges, there is no competitive examination or other effective procedures through which village authorities are appointed. And hence, it cannot be ascertained that the best people are given these jobs. And also, there is no conduct rules for the village authorities or Gaunburas, and there is no authority to impose the conduct rules on the villages. Since most of the village authorities are not educated and lacks in judicial knowledge, and it clearly indicates that there is a serious crisis of judicial ethics also. And lack of control of higher judicial authorities on conduct and functioning of customary laws. Since there is no control on the conduct and functioning of the on the conducts and functions of the village authorities, which will further encourage the village authorities or Gaunburas to be biased also and get influence also at times. And therefore, if the power of the village authority and Gaunburas are going to be enhanced, then there has to be an effective control mechanism which will ensure misuse of powers by the village authorities or Gaunburas. The AFR 1985 and the Arunachal Pradesh Civil Courts Act 2021 has effective check and balance or control mechanism to ascertain misuse of powers by the village authority and Gaunburas. The most important check and balance or control mechanism adopted in AFR 1985 are the appointment process, jurisdiction, dismissal process. And in the appointment of village authority is basically done by the majority of the village people. After appointment, the jurisdiction of the village authority to exercise its power is within its village only. The village authority cannot go beyond its village to exercise its judicial power. And then the dismissal of the village authority for being biased and unjust can be initiated on the agreement of the majority of the people of that particular village. Hence, it is very clear that if a village authority or Gaunbura for that matter is biased or unjust, then people of the same village can remove him. In this way, there is a control on village authority from misusing its power. But if the jurisdiction of the village authority is not confined within its village, and if the village authority is given the jurisdiction to exercise its judicial power beyond its own village, then he becomes immune to dismissal process. It is because of the village authority, because the village authority will misuse its power in other villages, and the people of the village will not be able to initiate dismissal of the village authority since he is from different village. In many parts of Arunachal Pradesh, administration and people misinterpreted the AFR 1845 and constituted different levels of customary courts, like village level, circle level, and district level, and therefore distorting AFR 1945 to even more extent. For every village level cases, all the village authorities of the nearby village form a group
to take up the village level cases. Now the group of village authorities becomes immune to dismissal process because they are exercising judicial power beyond their given jurisdiction. And the people of the village cannot initiate the dismissal process. Hence, due to lack of such check and balance mechanism, and the village authorities in groups become reckless in exercising its judicial power, leading to injustice and unfairness. And then one more disadvantage to allow village authorities to go beyond its village jurisdiction is the expenses of travel to other villages. I'm talking about that expenses. And it is in this pretext that the group of authorities, village authorities, gaon buras or gaon buris, they start charging high amount of fees, which in certain places it may be called as Urgoni or Melua, or in many other parts of Arunachal Pradesh. In fact, this I hope is prevalent. And hence it becomes very costly affair for the poor people and leads to clear corruption. And therefore it is very clear that the village authorities or gaon buras do not easily get influenced, and hence the check and balance and control mechanism should be designed in such a manner that even after getting influenced, the village authorities or gaon buras should be compelled to deliver a fair judgment on any given particular case. And therefore the following provisions I would like to suggest that may be included in the bill, that the only educated people with fair knowledge of law and Indian constitution should be eligible for village authority or gaon bura. The consent of the majority of the village should be taken for appointment of village authority or gaon bura. Jurisdiction of village authority, gaon buras should be strictly within its village only, jurisdiction only. And then this institution should be strictly prohibited from exercising its power beyond its village, and if he is found to do so, then he should be dismissed. There should be control on conduct and functioning of customary court by higher judicial authorities, which shall also address the complaints of misconduct against the village authorities. These judicial authorities should also be responsible for appointment and dismissal of village authorities. And a clear liberty should be given to both the parties to opt for trial at regular judicial court in place of village level customary court or district level customary court if he or she feels that the village authority shall be biased and unfair in this particular case. And also it is extremely contradictory that the judges of junior division civil court is given jurisdiction of civil suits up to 10 lakhs only, whereas an uneducated village authority with no legal knowledge are given a jurisdiction of civil suits of unlimited amount. It is also well understood that there are different kinds of established laws and acts for different kinds of offences and suits, and hence it is practically futile to let an ignorant village authority to judge the case who do not even know the underlying laws and acts as prevalent. Therefore, the consent of both the parties must be taken in order to try a case at village customary court or district customary court. And also restriction on presidents and general secretaries of Gaon Bura Association. We have ample of ample of these presidents and secretaries in Arunachal Pradesh. And now what happens if district level customary court is made legal, then the president and general secretary of the Gaon Bura Association of the district should be restrained from participating in any case at district level customary court, as they could easily influence the decision of the cases. So these are my few, why I support this particular bill, but these are my few observations which I would like to make. At the same time, I would like to bring to the notice of this august house that in Tirap Changlang Longding district, we have this mention of Gaon Bura, Gaon Buri, Head Gaon Bura, Buri and all these things. But unfortunately, we feel that the institution of Gaon Buras is very, very important. But at the same time, we also feel that the participation of these women in these institutions is missing, because we are yet to have a single Gaon Buri in Tirap Changlang Longding district. And this I hope the House would take note of. And with these few distinct observations, and also with these suggestions that the traditional village system would be a very, very vague term unless we identify that institutions called the Wanghams or the Lowangs or such other names in that particular bill. Otherwise, it may be an impediment in the long run, especially while administering in the villages. With these few observations, I conclude. Thank you so much, Deputy Speaker, sir, for giving me this opportunity. Next, Honorable MLA Kento Jindiji. Mr. Deputy Speaker, sir, while supporting the Assam Frontier Administration of Justice Regulation Amendment Bill 2023, I would like to throw some lights
the grievances, especially the legal fraternity of Arunachal Pradesh were facing, and which has been corrected today by way of amendment bills. In Assam Frontier Administration of Justice Regulation Act 1945, so many amendments has been brought today. Before that, I would like to throw some lights about the village council system of various communities in Arunachal Pradesh. There are various communities, major 25 tribes. They have their own village council systems, which I have randomly collected. If something wrong goes wrong, please pardon me. In the village council system of Apatane call village council system as the Buliang, Kamti as Muksung, Noktes as Nongwang or Ngoang. Tangsas have their three council systems, run by a Lonchung group, Rongtung by Muklum group, Rukwatin by Yogli group, Wansos as Ngajwa by the Ngianu village, Nisi called Nyel or Dupom, Tagin called as Dupam, Monpa, Mangma, then Sartukpen called is a Jang or Jamba, Aka called Meye or Daj. Adi, Kabang, Galo call it as Geba, Idu Mismi, Kabaya, Kamba as Sondi or Je. And among these all village council system, by way of insignia, the red coat has been provided to the village authorities. However, among Noktes and Wanchos, they have traditional officials, and sometimes these Gaupuras are not called up. That way, the Arunachal Pradesh Civil Courts Act 2021 was introduced, wherein classes of courts has been included under Section 3. That in AFR, there was not classes of courts, it only speaks about the criminal, police, and civil administration of justice. Keeping in view, the Civil Courts Act was brought in 2021, wherein 5 courts were declared that I will not take other, but in the last court, the customary courts was recognized as the last court in Arunachal Pradesh, means the smallest court as a village council system. However, under Section 5 of Assam Frontier Administration of Justice Regulation Act, Gaupuras are appointed, and PI political interpreters. In due course of time, PI political interpreters are not allowed to participate in judicial system, but as and when they required, still they are summoned. In the proposed draft amendment bills here, Section 1 has been amended as one of the learned friend has already pointed out. The AFR 1945 was amended way back in 1945 under Limitation Act, under Section 29 of Limitation Act. And it was amended, enacted for the state of Assam, where there was no Arunachal Pradesh nomenclature. Now, in that enactment, Balipara, Lakhimpur, and Sadia and Tirap frontier tracts only were made, which has been now substituted by a district or Arunachal Pradesh. And second, in the deputation, amendment F has been added, and wherein the chronologically they have set up in the definition and include F. The F sections, F clause was not there. By way of this amendment, the F has been brought into, and in the F,
village authority has been defined. Who are the village authority? So I would like to throw lights on the definitions given in the proposed amendment bills. Then two, they include sections. Village means, village authority means traditional village council or inter-village territorial council or apex council by whatever name called, including head Gabura, head Gaburi, Gabura, Gaburi, and traditional village head. In the AFR, only village authority were recognized. But here appeal provision has been given if a person agreed by the decision of the village authority, it will go to a Bango level kava, like appellate forum. And district like a circle level kava. If somebody agreed, then straightway it will go to district court by way of appeal, which has been incorporated in the Civil Courts Act. That I will not go into, but today I will only discuss about the amendment made in this act, these bills. And in section 4 also, amendment has been sought in serial number 4. Here, earlier, whenever some cases were brought before assistant commissioner or deputy commissioner, they used to refer the matter to civil courts. But now, by way of amendment, whenever cases is brought before them, the cases will send back to the village authority. That has been rectified. And customary courts or apex customary courts. This is the nomenclature. This nomenclature may be given from tribes to tribes or from council courts to council courts. And in section 5 also, amendment has been also brought in. Here, subsection 1 to 1.2 only speaks about Gaburas, but in clause 3 has been inserted, giving the power of state government to frame a guidelines. Here I would like to throw lights to the August gatherings, August House, that in the bills, clause 3 has been added, the state government may frame guidelines for all or any matters as may be deemed expedient, including election, selection, appointment, power, function, and meeting of head Gaburas, Gaburi, and Gaburas. Here I would like to add some supplements. Instead of government for framing guidelines, let us include rules. Guidelines is only directory in nature. It is not a bounding. It cannot bind the laws. Therefore, I request through Deputy Speaker that this should be changed as a rules instead of guidelines. Because this is an act we can bring as a rules so that this can be implemented in the court of law. Otherwise, guideline cannot be implemented. It is a directory in nature. And that effort, last in explanation clause, earlier under section 5, Deputy Commissioner used to appoint Gaburas and Gaburis of their own without referring the matter to the government. Now, for appointment of Gabura, Deputy Commissioner has only a recommending power and matter is being sent to the government for approval. So in this clause, last explanation clause, we should write like this: appointment by, the head Gaburas and Buras shall be appointed by the Deputy Commissioner of the respective district on being approved by the state government. That sentence be added so that
there may not be complications, controversies in days to come. And I would like to move into the section 24, where amendment, I will not touch all sections, but important clause I will touch. In serial number 9, substitution of section 4. In AFR, this is section 24 refers about the criminal cases. But here wrongly it has been inserted as a civil junior judge, the courts of civil session senior judge, the courts of additional district judge, courts so and so. So here also I would like to suggest, since it is the matter refers about the criminal case, this cannot be a district judge. Instead of that, it should be, instead of civil judge junior division, this should be a JMFC, judicial magistrate plus first class. Civil judge junior division should be referred as a CGM, court of additional district judge as additional session judge, and court of district judge as a session judge. So that in later part, complications may not arise. Because it has been wrongly, it may be a typographical mistake. I don't know, but it has been wrongly added. And as you know, under AFR, Assam Frontier Administration of Justice Regulation Act 1945, as in short it is called AFR. In AFR, the ex parte provision has not been kept since time immemorial, but since 1945. Now, due to that, whenever Gaobura sits a meeting, summon a meeting, and every party, if does not come, even the Gaoburas cannot pass the ex parte decisions. Keeping in view, this time in section 4, the execution part has been added by inserting clause 4. If by this amendment, by this way of amendment, the execution decision, execution part has been added, and if it is so, as per this clause, when the summon is called for 3 times, and if the other party does not turn up, then the village council system or village authority can pass an ex parte decisions. That way, that decision can be bind upon the 2 parties. And if party appealed agree, they can go for appeal. And section 15 of Civil Courts Act 2021 speaks about the customary courts. Here, provision has been kept that whoever agree by the decision of the customary court means village authority or Gaburas, the person agree can prepare appeal to the court of district judge. And section 45 speaks about the procedure. Here amendment, I am talking about the amendment part. Section 45 has also been amended, wherein the procedure of procedure after pronouncement. Here, execution part. As you know, this has been. Honorable members, with the permission of the House, I extend the time up to 1:30 p.m. In AFR, execution part has not been kept, but here execution part has been kept because earlier days, the Gaburas has no machineries to execute decree passed in their or decision passed in their institutions. But by way of this, the execution part has been kept. But in this, I would like to request Honorable Deputy Speaker that instead of Deputy Commissioner, let us keep the session district court or session court as the executing court, because Deputy Commissioner has no time to execute all cases filed before them. This is also execution part is also is resemblable to judicial system and is like a regular case. Therefore, even if we file a case before the Deputy Commissioner, they do not know the pros and cons of laws, and thereby the litigants are facing acute problem due to their ignorance or lack of knowledge.
Therefore, my prayer and my request is that let us keep district judge as the executing court for the customary courts. Now, as my one of learned friend said that he has read out that Gaoburas should well versed with all laws like standard laws like IPC, CRPC. In my view, all Gaoburas need not have knowledge about the IPC, CRPC, Evidence Act, but they should well versed with customary courts, customary laws of every communities, so that they're while executing justice delivery should be meted out and fair judgment can be meted out. But they should know about the customary court, customary laws. And in my opinion, since we are going to have a Bango level or circle level kaba, circle head go be appointed so that whenever there is a cases, appeal or can be, or any appeal should be filed before them, or president, district president, like that. As you know, in some districts, village council system or Gaobura system are not much effective. If we talk about the Tawang district, and if we talk Tirab and Sanglang, the Gaobura systems are not much more strong like that of West Adibels or Galobels or Tanibels. This, all in these districts, really justice delivery system through customary courts are very effective. Therefore, this is a very important part in a justice delivery system. So, with that, I would like to support the bill introduced by the concerned minister, and this is really a need of an hour, and we have been awaiting this amendment from very from long years, and if it is amended and approved today, really Gaobura's system and village council systems will be strengthened. With that, I support and appeal all friends to support these bills so that we can implement in the floor hours. Thank you. Deputy Speaker, sir, thank you for permitting me to take part in the Assam Frontier Administration of Justice Regulation Amendment Bill 2023. I feel that this amendment is long overdue and a need to reflect upon the customary laws that prevails in the state of Arunachal should be further highlighted and strengthened. Most of the speakers before me, honored members, were in approval and support of this bill that is to be enacted with certain changes that may be required. Assam Frontier Regulation Act of 1945, which empowers the traditional councils and also the creation of Gaomburas. Gaomburi is a new phenomenon, I presume. So these institutions that has prevailed has been performing its duties substantially in the villages in different parts of the state.
I would like to assert Chapter 3, Clause 4, F, which pertains to the meaning of village authority. Many members have also stated village authority means members, traditional village council or inter-village territorial council or apex council or whatever name called, including head Gaumbura, head Gaumburi, Gaumbura, Gaumburi, and traditional village head. It's fine that we give emphasis to the authority of the Gaumburas. But then, as some of the members have also pointed out, Gaumburas were a link between the administration and the public, sort of an interpreter duty to be performed. I've raised the question in the question hour regarding to the system of chief system in Nokte Wancho, Khamti and Singpho. The state government in its reply was very positive, and they said that they had recognized this system. Let me go back prior to the 1945 and also the institutions of the Gaumbura system. The traditional chief system amongst the Noktes and the Wanchos and the Khamtis and the Singphos were from times immemorial, like some of the indigenous other tribes made to have. And the duty performed by these individuals, the chief system in particular in our area, was very substantial. Even the Tutchas also do have the chief system. Prior to the advent of the administration, and even in the British era, the chiefs, traditional heads, they played a very important role in bringing peace and in bringing unity amongst the villages. I'll give you one example of the role of the chiefs. We all have heard of the Ninu massacre, the tragedy of Ninu, 1875. And after the punitive expedition, after the massacre of the survey party led by Captain Bradley and Lieutenant Holcomb in Ninu, the Britishers commenced the punitive expedition in the following year. They burned various villages, the Wancho villages. And after a year, it was rebuilt again, Ninu village. After being rebuilt, a second punitive expedition was to take place by the British against Ninu village, and it was again to be burnt. Now, due to intervention of the Namsang chief, who had connections with the British, Ninu village did not bear the pains of further destruction, like burning the villages a second time. So the roles that the chiefs played in bringing about amity, unity and peace amongst the people of those times, their duty, their performances, even to this age, to this moment, continues. In the year 1962, again, there was almost a clash, a war took place amongst the Noktes and the Wanchos. Not particularly Noktes, because some Nokte villages were with the Wanchos and some Wancho villages were with the Noktes. There was an area in between the Tirap and Longding stretch of land where the entire villages, they gathered together with arms and ammunition, everything,
prepared for full-scale war. It was due to the intervention also of the Assam Rifles, one company of Assam Rifles. The APO there, Mr. Shyam was there. Then somehow managed to pacify, and the chief of Bodria and Namsang too played a very active role in pacifying what could have been a very destructive and disastrous situation. That situation again crept up in 1968. Again, a situation of war-like situation happened. Again, the Assam Rifle, and that time the CRPF also was there. The same situation of, the clash between the Noctes and the Wanchos. Not particularly Noctes and Wanchos, I'll repeat. Because some villages were with the Noctes, some were with the Wanchos. So again, a settlement was reached due to the intervention of some of the Wancho chiefs, prominent chiefs, and also Bodria and Namsang. That it was pacified in 1968. And the place where that era of occurrence, near the Tirap and Longding boundary, that forest area, it was a forest area, it was named as Shanti Ling. Shanti means peace forest, a forest of peace. No activity would take place. Now that peace has been maintained right through the ages, even up to now. Although the settlement has not been achieved, but the intervention of the chiefs, the substantial role the chiefs played in bringing about amity amongst the people and a feeling of brotherhood in a situation so disastrous that could have been, is tremendous. So these are the institutions which we have. Even at the moment, there are clashes where many incidences take place. But the chiefs play a very effective role as far as traditional court, land, because the chief also plays not only a political role, he plays a traditional role, customary role, social and even religious. So he's quite pervading in the society, as it may be. And I feel that one of the members, Mr. Gabriel Wangsu, also insisted upon, suggested, so to say, that the chieftainship in the traditional councils of Noctes and Wanchos, Khamtis and Singpos should be added in the list. Because even now, whatever action or whatever, customary performances do take place, it is with the consent of the chiefs. And to keep them aside and say that you have no more role, what will happen is that there will be a fragmentation of the peace that already prevails amongst the societies, especially in our societies. Village will get divided and clashes may take place. So what we want is that this bill is, I think, to assist the administration, to assist the government in performing the duties in the traditional level, village level. So that is the very purpose of the bill that has come up. So I think the people who are relevant to this part of the bill should not be omitted. They have a name. Village council, it's very ominous in the sense that anybody, say territorial council or the circle and other other names are also there. So tomorrow, say the community-based organizations, so many of them may come up. Whom will you take and whom will you reject? So these are the bases which are quite open and to suggestions. But what I feel that when we say that we are enhancing or strengthening our traditional age-old customs, so these are the people who were, who helped to maintain that peace. And the word chief is not so derogative. It is not a system of the rajas or what people may have been conceptualized. It is they are head of a certain group of people known as the chief. The chief is relevant, the word is quite relevant even now. So
I feel that the Wangham system or the chief system or the committees and the Singfos, the name which we have, is not defamatory in nature, and I suggest and I appeal to the government that the name of the chieftainship of these 4 particular tribes should be included. And also the very purpose of this bill is also states, as far as the statement and the objects are and the reasons are concerned, is to formulate a plan in which our traditional, our custom, our land and resources will be protected and preserved. Now that needs a constitutional amendment, because it comes under the article of 371A, 371 H and 371G when we talk of this, as per the statement given by the reasons given. Now I would also like to bring out a similar bill passed by this House in 4th November 1994, wherein it stated that here it was known as the Arunachal Pradesh Protection of Customary Laws and Social Practices Bill 1994. A part of the bill which states that in this act, 2, 3, in chapter 3 of and 2A, its act, it says that in this act, unless the context otherwise requires, customary or social and cultural practices mean such beliefs, indigenous faith and practices, including rites, rituals, festivals, observances, performances, abstinence, customs, rights, including ownership and transfer of land with its resources and properties thereon, as have been found, sanctioned, approved, performed, practiced, enjoyed by the indigenous communities of Arunachal Pradesh from the time these communities have been known. And there are various other statements pertaining to this bill, which is quite informative, and I will not go through the entire context of it. But this bill never saw the light of the day. What I would like to tell the August House is that this bill never saw the light of the day, because herein we have touched upon an article which needs an amendment by Parliament. Because we are touching Article 371H and Article 371A also, including it. So how correct it may be for this House to, mention it, that I think Honorable Chief Minister will explain to us. Because as far as the procedures of the bill is concerned, very informative and very necessary. It has to be done. But then, whether the Government of India will agree to it in the context of Article 371H, 371A and G is concerned. Because herein also, as far as the reasons are concerned, it also gives us the right to ownership of land and resources. The customary law is okay, it's all right. But when the custom of land and resources comes, then there's a question mark. Article 371H of the Constitution does not provide us nothing. Our state has got nothing, so to say. It only provides the governor with special powers as far as law and order is concerned. So this is very informative and very correct to be amended. So I feel that a thorough inspection is required, and Honorable Chief Minister will kindly enlighten us to the context of this bill and how far it can be achieved. If it is done, I think it will be the best for our state. The best for our state, which is required. And also, once again, before I end my participation, I would also like to once again suggest that this, as far as the 5 tribes are concerned, including Tutsa, the word chieftainship should be included
in the traditional council. Thank you. Any members? Really, sir, before your reply, it's very lucky. I feel myself very lucky that I'm holding this particular topic chair in this August House. Really, I'm very sorry to hear that here Tutsa tribe is missing, since chieftainship is prevailing in our tribe also, because I'm also from Tutsa tribe. Otherwise, this house will mislead to the people, or it will be half done. So, Tutsa also having more than 47 villages occupying in Tirap and Changnam district, and likewise, alike Nokte and Vanchos, they are having chieftainship. Tutsa also having chieftainship. Rest, I think, other societies, they are having headman. Headman is selected or elected by the people by observing his what called ability or his clarity, as like GBs. Nowadays we used to select or elect GBs likewise. But chieftainship is not like that. Chieftainship is coming from hereditary. Hereditary, by virtue of hereditary, one should become a chief of that particular village or particular area, what called locality. So I do submit here to insert or to include Tutsa tribe in, we used to call Lungwang, Noktes call Lowang, and this Vanchos call Wangham. We used to call Lungwang. So this was my submission to the authority, especially to the government. So now the Chief Minister and Minister in charge of Law, Legislative and Justice may reply. Sir. Honorable Deputy Speaker Sir, आज इस सदन में जो अमेंडमेंट जो बिल लेके आया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे जितने भी जो मेंबर्स इस बिल में पार्टिसिपेट किया, इस बिल को अप्रिशिएट भी किया, और कुछ सजेशंस भी इस सदन में रखा। श्री न्यामर करबक, श्री करदो निगर, श्री तानिया सोक्की, श्री गैब्रियल डी वांगसू, एडवोकेट जिनी साहब और वांगलिन लोंगडोंग साहब। तो ये जो आज द आसाम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इसमें हम लोग अभी बहुत सारा सेक्शंस और सब सेक्शंस को हम लोग ने यहाँ पे प्रपोज किया हुआ है, और आप सबको पता है कि हम लोग ने ऑलरेडी इसी सदन में अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस कोड बिल को भी हम लोग ने पास किया हुआ है। तो जनरली हम लोगों का मोटिव हमेशा ये है कि जो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म को और भी हम लोग फास्ट ट्रैक कैसे किया जाए। आजकल का दिन में सबको पता है कि वेरियस कोर्ट्स में काफ़ी मैटर पेंडिंग भी चल रहा है, और ख़ास करके अपना गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो लेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और चाहे अपना राज्य का सरकार हो, हम लोग हमेशा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को हम लोग इम्पोर्टेंस किस प्रकार से उसको और भी इम्पोर्टेंस दिया जाए, उसका दिशा में भी हम लोग काम कर रहा है। सो दिस इज अगेन एन ऑफशूट दैट हाउ टू एम्पावर आवर ट्रेडिशनल सिस्टम, जो पुराना जो ट्रेडिशनल इंडिजिनस अपना पुराना जो सिस्टम होता है, कस्टमरी लॉज को और भी कैसे हम लोग एम्पावर कर सकते हैं। तो ये एक प्रयास हम लोग ने अभी किया हुआ है। इसमें अभी बहुत लोगों का सुझाव यहाँ पे आया, जितने भी स्पीकर्स हैं बहुत अच्छा सुझाव भी यहाँ पे दिया हुआ है, और ख़ास करके सभी लोगों का एक कॉमन एक सुझाव तो यही था कि जो आज गांवगुरास लोग खास करके जो गर्म कपड़ा जो वो लोग पहनते हैं, लाल जैकेट, तो उसके ऊपर में दिस इज जस्ट एन पॉलिसी डिसीजन ओनली, उसको हम लोग यहाँ पे असेंबली में इस बिल के साथ में रिलेटेड करके चर्चा करना ज़रूरत नहीं है। मगर ओवर द ईयर्स हम लोग मैं जब भी टूर में जाता हूँ तो जब मैं जीबीस लोगों को मिलता हूँ
तो वो लोग ने भी ओवर द टाइम थोड़ा सा अपना यूनिफॉर्म को भी अभी थोड़ा सा एक मॉडर्न टच तो दिया हुआ है। गवर्नमेंट की ओर से जो फंड होता है कंसर्न डिप्टी कमिश्नर का वहाँ प्लेस किया जाता है और अकॉर्डिंगली वो लोग जैसे सीजन का मुताबिक किसी में पतला कपड़ा यूज़ करता है, कोई अपना कंफर्ट के मुताबिक यूज़ कर लेता है। सो दिस आर जस्ट एन पॉलिसी डिसीजंस, उसमें हम लोगों को उतना यहाँ पे डेलिब्रेट करने का ज़रूरत नहीं है, मगर आने वाला दिनों में डेफिनेटली इस पॉइंट्स को भी कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स को हम लोग नॉलेज में दिया जाएंगे। और इसमें अभी बहुत सारा चीज़ जो है अभी जैसे जीबी का नोमेनक्लेचर भी चेंज होना है बोल के भी यहाँ में कुछ मेंबर्स ने बात उठाया है, क्योंकि गांव बुरा और गांव बुरी आज का युग में सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है टाइप का ऐसे बोला है। बट दिस आर ऑल कुछ सोशल इश्यूज भी है, इसको हम लोग फिर लार्जर प्लेटफॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जो मेन जो हमको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है और जो पार्टिसिपेशन यहाँ पे जो हुआ है, खास करके अभी अगर हम लोग चीफ्टेनशिप का बारे में बात करें, दिस इज रिलेटिंग टू अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2। और जो नया जो हम लोग ने सेक्शन 2 में नया एक सब सेक्शन F जो हम लोग ने इंसर्ट कर रहा है, अगर बिल में देखिएगा तो सीरियल नंबर 3 में हो, वो एक्चुअल ओरिजिनल बिल में वो सेक्शन 2 का है। तो इसमें जो विलेज अथॉरिटी का जो डेफिनेशंस यहाँ पे दिया है, विलेज अथॉरिटी मीन्स मेंबर्स ऑफ ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल और इंटर विलेज टेरिटोरियल काउंसिल और एपेक्स काउंसिल बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इंक्लूडिंग हेड गांगबुरी, गांगबुरा, गांगबुरी एंड ट्रेडिशनल विलेज हेड। तो इतना तक में सीमित करके रखा हुआ है। और मेंबर्स लोगों का अभी जो डिस्कशन कर रहा है, इसमें अभी बहुत लोगों का जो प्रपोजल आया, खास करके ईस्टर्न साइड में हमारा जो चीफ्टेनशिप जो सदियों से ही जो चल के आ रहा है, उनका भी यहाँ पे जिक्र होना है। और कुल मिला के ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, आपने भी मेंशन किया जो आपका जो ट्राइब है तुत्सा, उसमें भी शायद चीफ्टेनशिप है, और नोक्ते में है, वांगचो में है, खमती में है और सिंगपो में है, और तुत्सा को मिलाएंगे तो 5 ट्राइब में ईस्टर्न साइड में ये चीफ्टेनशिप है। तो ओवर द ईयर्स चीफ्टेनशिप ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो जिसका कुछ एग्जांपल्स हमारा सीनियर कलीग अपना लोवांगडोंग साहब ने भी इस सदन में जो रखा है। तो हम लोग बिल्कुल ऑनर करते हैं चीफ्टेनशिप का सिस्टम। प्री इंडिपेंडेंस से लेके सदियों से ही लेके वो लोग ने जिस प्रकार से अपना समाज में जो योगदान दिया है, उसका हम लोग बिल्कुल ऑनर करते हैं। मगर साथ साथ अभी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन आवर कस्टमरी लॉज इन ग्रासरूट, ये तो एक पहला एक अटेम्प्ट है। तो इसमें मैं मानता हूँ कि कुछ कुछ बिल्स में भी लिखना होगा, या इसमें कुछ कुछ और भी हम लोगों को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए इन डेज टू कम हम लोगों को इसमें प्रोविजंस और भी डालना होगा। जैसे अभी बहुत सारा ट्राइब्स में हम लोग जो इंडिपेंडेंस से पहले, क्योंकि कम्युनिटी तो बहुत हज़ारों सालों से बस के चल के आ रहा है, तो अपना अपना ट्राइब का अपना अपना एक नियम होता है। आपतानीस का अलग होता है, और यहाँ का अपना निशीस का अलग, तागिन का अलग। जैसे तागिन में जिस प्रकार से जो फंक्शन हो रहा है, तानिया सुकी साहब ने हाईलाइट किया, और शेरदुकपेन में अलग होता है, आदि और गालो में अलग होता है। हमारा इवन मोनपा में भी ट्रेडिशनल जो कस्टमरी लॉ है वो टोटली अलग है। तो इसमें अभी चीफ्टेनशिप लोगों का रोल को इसमें कैसे इंसर्ट करना है, इसके अलावा जो इसलिए हम लोग ने इन जनरल यहाँ पे अभी फर्स्ट जो फेज के लिए हम लोग ने इन जनरल यहाँ पे ट्रेडिशनल जो काउंसिल बोलो या ट्रेडिशनल विलेज हेड, इसलिए हम लोग ने लिख दिया क्योंकि वो एक कॉमन एक नोमेनक्लेचर हो जाता है। इसको अगर डिटेली अगर हम लोगों को इंसर्ट करना है तो बाद में फिर इसको दोबारा फिर हम लोगों को एक अमेंडमेंट के रूप में हम लोगों को और भी स्टडी करके रिसर्च करके हम लोगों को यहाँ पे लेके आना होगा। अभी यहाँ में ऑनरेबल मेंबर श्री लोहाडोंग साहब ने साथ में एक यहाँ पे एक कंसर्न भी रेज किया है कि इस बिल को अगर हम लोग आज पास करने से विल इट अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 371H। तो 371H के बारे में कल इस सदन में माननीय हमारा जो सीनियर कलीग श्री नीनो इरिंग साहब ने भी 6 शेड्यूल के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पे एक रेजोल्यूशन का तौर पे लेके आया था। तो मैंने भी कल पार्टिसिपेशन में ये बोला था कि अरुणाचल में स्टेटहुड जो है बहुत ही हड़बड़ी में हम लोगों को दे दिया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस
हम लोगों का ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को सेव गार्ड करने के लिए कुछ प्रोविजंस नहीं देते हुए केवल सिर्फ एच कैटेगरी में 371H में डाल के ऑनरेबल गवर्नर को लॉ एंड ऑर्डर में एक स्पेशल पावर है बोल के मेंशन करके स्टेटहुड हम लोगों को दिया गया। सो इसीलिए इस सदन ने हम लोग ने लास्ट टाइम भी चर्चा करके हम लोग ने 371H को और भी हम लोगों को ट्राइबल वैल्यूज़ को प्रोटेक्शन देना है बोल के यहाँ से ऑलरेडी मैटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिकमेंड करके भेजा हुआ है। मगर आज का जो ये बिल लेके आया है, दिस इज़ द असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेगुलेशन 1945, जो ये एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्री इंडिपेंडेंस लॉ, जिसमें हम लोगों का जो इंडिजिनियस जितने भी अरुणाचल में जो इंडिजिनियस जो जनजाति यहाँ पे बसे हुए हैं, उनका जो ट्रेडिशनल कस्टमरी को सेफगार्ड करने के लिए उस रेगुलेशंस में मेंशन है। तो हम लोग फिलहाल इसी को ही हम लोग अमेंडमेंट कर रहा है, इस रेगुलेशंस को ही हम लोग अमेंडमेंट कर रहा है। उसमें आर्टिकल 371H से इसमें कुछ कनेक्शन नहीं है। यहाँ स्टेटमेंट में हमने ज़रूर लिखा कि आर्टिकल 371H में बहुत सारा प्रोविजंस है। नागालैंड में 371A का हो गया, फिर मिजोरम का 371G का हो गया, मगर अरुणाचल में अपना इंडिजिनियस कस्टमरी को सेफगार्ड नहीं है। इसलिए हम लोग ने ये असम फ्रंटियर रेगुलेशन को ही लेके आया इस सदन में, और इस सदन का पावर भी है कि इसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं। सो इसी का मुताबिक हम लोग ने ये फर्स्ट अटेम्प्ट हम लोग ने यहाँ पे किया हुआ है। और हमारा जो एडवोकेट केंतो जिनी ने यहाँ पे बहुत एक प्रैक्टिकल सुझाव यहाँ पे दिया है। मैं ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, बिफोर पासिंग दिस प्रपोज बिल, जो उन्होंने जो प्रपोज किया है कि एक्चुअली इसका मेन इंटेंट जो था कि हमारा जो ट्रेडिशनल जो चाहे वो गांवबुरा हो या ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल का जो सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम लोग ने जो यहाँ पे प्रपोज किया है, आई थिंक कुछ टाइपिकल एरर के मुताबिक से इंस्टेड ऑफ क्रिमिनल यहाँ पे सिविल जज के बारे में मेंशन किया हुआ है। सीरियल नंबर 9 ओरिजिनल जो रेगुलेशन सेक्शन 24 को हम लोग अमेंडमेंट के लिए यहाँ जो लेके आया। तो आप लोग देखेंगे तो पेज नंबर 2 में सीरियल नंबर 9 का लास्ट पैराग्राफ में जहाँ जहाँ ये सिविल जज जूनियर डिवीजन लिखा गया है, उसको रिप्लेस करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और जहाँ में सिविल जज सीनियर डिवीजन लिखा गया है उसको रिप्लेस करेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जहाँ में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मेंशन किया गया है उसमें हम लोग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का उसमें रिप्लेस हो जाएगा, और जहाँ में डिस्ट्रिक्ट जज लिखा हुआ है उसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वो उसमें रिप्लेस किया जाएगा। तो मैं लास्ट पैराग्राफ को इन मॉडिफाइड फॉर्म में यहाँ सदन में पढ़ना चाहेगा। लास्ट पैराग्राफ सीरियल नंबर 9 जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 24 लिखा है, उसका जो लास्ट पैराग्राफ इसमें जो लिखा है अभी जो मैं मॉडिफाइड फॉर्म में मैं पढ़ना चाहेगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट an appeal arising out of the discussion of village authority or inter-village territorial customary code or apex code or apex customary code, as the case may be, shall lie before the court of judicial magistrate first class, the court of chief judicial magistrate, the court of additional district session judge, or the court of district and session judge, as the case may be, as per their territorial and pecuniary jurisdiction, who shall not set aside an appeal so filed merely on technical grounds or procedural lapses, but in the interest of justice dispose of the same as may be deemed appropriate or proceed with the case de novo. तो इस पैराग्राफ को हम अभी मॉडिफाइड फॉर्म में यहाँ अमेंडमेंट को हम रिप्लेस करना चाहेगा। और जो अभी जैसे मैंने कहा है कि ये जो AFR जो है असम फ्रंटियर रेगुलेशन को हम लोग ये फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहा है कि ताकि अपना कस्टमरी लॉज को और भी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। अभी बहुत लोगों का कंसर्न है कि अपना पुराना जो ट्रेडिशनल जो चिफ्टनशिप हो गया और भी बाकी ट्राइब्स में काफ़ी पुराना एक अपना कस्टमरी एक सिस्टम होता है, उसको यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट किया जाए। इसमें अभी मैं कहूँगा कि हम लोग आई थिंक हम लोग इस सदन में चर्चा करके हम लोग उतना नॉलेजेबल भी नहीं है, हम लोग एक्सेप्ट करना चाहिए इसको। हम लोग आज का सदन में फ़िलहाल पहले इसको हम लोग पास कर देंगे। पास होने के बाद मेरा ये प्रपोजल रहेगा
कि एक बार ये बिल जो है एक्ट फॉर्म में आ जाने का बाद में फर्दर उसको फिर कैसे मॉडिफाई किया जाए, फर्दर इसको कैसे स्ट्रेंथनिंग किया जाए, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस इनिशिएट करेगा। और साथ में अपना यहाँ में जो बाहर काउंसिल है अरुणाचल में उनको भी लूप में रखेंगे, और जितने भी हमारा जो ट्राइब्स है वहाँ उन सभी ट्राइब्स को भी लूप में रखते हुए हर एक जो एक्ट के तौर पे जो पब्लिश होने के बाद तो फिर और भी हम लोग डिलिब्रेट करेंगे कि अपना कस्टमरी जो सिस्टम को और भी कैसे स्ट्रेंथनिंग किया जाए। तो कंसल्टेशन होने के बाद देन अगेन वी कैन कम बैक टू दिस हाउस एज फेज 2, मतलब सेकेंड इसका अमेंडमेंट के लिए। तो फिलहाल हम लोग ने जो फर्स्ट फेज में जो लेके आया है दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि हमारा जो पुराना कस्टमरी जो सिस्टम है और ख़ास करके हमारा चाहे वो चीफ्टेंस का हो, चाहे अपना ट्रेडिशनल कस्टमरी जो वहाँ पे काउंसिल हो, और चाहे अपना हेड जीबीज़ का हो या जीबीज़ का, उनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ये एक्ट जो है, ये बिल जो है बहुत ही ज़रूरत है। तो मैं माननीय डिप्टी स्पीकर साहब आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि सभी मेंबर्स को कि इस बिल को आज पास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Now, the question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now we will take up clause by clause for consideration of the bill. The question is that clause 2 to 13 do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 2 to 13 stand part of the bill. The question is that clause 1 enacting formula and the short title and commencement to stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the short title and commencement stand part of the bill. The Chief Minister and Minister in charge of Law, Legislative and Justice may now move the motion for passing the bill. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Assam Frontier Administration of Justice Regulation Amendment Bill 2023 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The Assam Frontier Administration of Justice Regulation Amendment Bill 2023 is passed. Honorable members are requested to join for lunch in Banquet Hall, Legislative Assembly. Lunch is being hosted by Honorable Minister of Agriculture, Horticulture, etc. Now I adjourn the House till 2:15 for lunch.